नमस्कार बजेट को नहीं आम स्वतंत्र उपस्थापना बजेट भारत को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका समस्त को नजर रही दर्शक बंधु आ मात्र किछि समय अपेक्षा किछि समय पर आसी पारे बजेट एवं बजेट को लेकिन लोकों को भीतर में देखुछु प्रबल उत्साह रही एथर बजेट रु कोन आसी पारे निर्मला सीतारमन को पेड़ी रु कोन आसी पारे जहा को लेकिन समस्त को नजर रही बड़ कथा होछि कि आ मात्र किछि समय अपेक्षा आसीबो देशर बजेट आय व्ययर हिसाब देबे सरकार संसद रे बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन हेले कहा पाई कोन व्यवस्था करिसेंती सरकार किछि बड़ घोषणा करिवे कि अर्थमंत्री कोन नुआ योजना नै आसीबे सरकार महंगा माडरू लोकन को मुक्ति मिलिबो कि विशेष करी महिला मध्यवित्तक पई किछि बड़ संकेत देई परंती कि काहेकि प्रधानमंत्री मध्य कहि सारिसेंती एवं सेमानक पई किछि बड़ घोषणा कर जाय पारे कि तेनु फोकस रे रहिबे महिला एवं मध्यवित्त महिला को सशक्त करने को नुआ योजना हुए तो सरकार आनी पारंती सेपरि इनकम टैक्स ऊपर मध्य समस्त को नजर रही आयकर सीमा छाड़ पाई अनाई बसिछंती मिडिल क्लास विशेष करी मध्यवित्तक पई एथर कोन रहउची ता ऊपर मध्य नजर रही दर्शक बंधु खर्च करिवार सामर्थ्य मध्यवित्तक हाथ रे रहिले ये अर्थनीति पई भलो बोली विशेषज्ञ कहि आसुछंती तेनु से दिगरे ध्यान देई पारंती सरकार सेपटे कृषक शिक्षा स्वास्थ्य पई खर्च मध्य पड़ी पारे नियुक्ति ऊपर फोकस करि पारंती से दिगरे हुए तो बड़ घोषणा होई पारे अर्थात आमको किछि समय अपेक्षा करबा को पड़िबो काहेकि राव किछि समय परे बजेट आगत करिवे सीतारमन अर्थ मंत्रालय रे पहुंची सारिचंती केंद्र अर्थमंत्री अर्थ मंत्रालय राष्ट्रपति भवन जिवे क्रमागत अष्टम थर बजेट उपस्थापन करिवार रेकॉर्ड सृष्टि करिवे तो यार भितरे पूरा बड़ कथा नजर रहउची एथर दर दाम वृद्धि साधारण लोकन को टेंशन देउची एपरि स्थिति रे साधारण लोक बजेट रु कोन आशा रखिचंती विशेष करके एथर बजेट कोन रही पारे एवं निर्मला सीतारमन को पेड़ी रु कोन सामना को आसी पारे जहा को नेकी समस्त को भीतर जेते बडे एक प्रकार उत्कंठा रहिची आ मात्र अपेक्षा रहिला अल्प समय तो बड़ कथा होची कि इनकम टैक्स आयकर सीमा कथा कहआ जाउची कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पई व्यय बराद बढ़ी पारे किछि समय पर आसीबो केंद्र बजेट जो बजेट को नेकी लोकन को भीतर आमे कहि परिबा प्रबल उत्साह रहिची एवं विशेष करी कि जेते बडे निर्मला सीतारमन को बजेट रे तांको ब्रीफ केस रु कोन आसीबो काहे कि आमे जदी पूरा कहिबा ब्रीफ केस रो व्यवहार कथा जेते बडे तांकर से नाली रंगर ब्रीफ केस रु कोन आसीबो साधारण बजेट रे थरो को क्षेत्र को प्राधान्य दे जीवो जहा पर सारा देशर नजर रहिची एवं बड़ कथा होची कि अर्थमंत्री भाबरे लगातार 8 थर बजेट उपस्थापना करी इतिहास रचिबा को जाउछंती निर्मला सीतारमन एवं बजेट आगत करिवार परंपरा आपण जानंती इ होची स्वाधीनता पूर्वर दशंधि धरी चली आसीथिबा बळे आज परंपरा बलपत्र रहिछि एवं समय बदलिबा सहित बजेट रो पेपर रखा जाउतबा ब्रीफ केस रो रंग रूप मध्य बदलि पारे लागिछि एवं भिन्न भिन्न अर्थमंत्री समय में भिन्न भिन्न ब्रीफ केस मध्य देखिछु यार भितर आज निर्मला ब्रीफ केस रु कोन सामना को आसुछि जहां पर नजर रहिछि एवं कुआ जाउछि ये होछि बहु प्रतीक्षित बजेट उत्कंठा बढ़उछि समस्त अपेक्षा रहिछि एथर कोन प्रकृति रे बड़ घोषणा करा जाई पारे विशेष करके आपण जेमति कहउतिलु महिला एवं मध्यवित्त मिडिल क्लास को पई गोटे किछि बड़ घोषणा करा जाई पारे कि सेहि परि कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर मध्य सरकार एथर गोटे बड़ घोषणा करि पारंती जेतु सरकार फोकस रहिछि नियुक्ति एम्प्लॉयमेंट किभଳି भाबरे पाइबो सेहि परि बड़ उपहार देई पारंती टिकस छड़ा आकार मिलबार सबुठ बड़ संभावना रही बजेट को लेकिन आम देखु लोकों भितर अनेक देखा कि आकलन कर प्रकृत में एथर बजेट रु मिल कौन प्रधानमंत्री संकेत दे सारी लक्ष्मी बोली कहते कहीं मध्यवित्त हाथ में टंका रहू लक्ष्मी रहू बोली प्रधानमंत्री गतकाली कहते अर्थात ये गोटे बड़ संकेत देते पीएम मोदी अर्थात मिडिल क्लास सुहाइला भली खुश करने एथर केंद्र सरकार फोकस करिपारंती एथर गोटे लोकाभिमुखी बजेट चर्चा होउची तो किसी समय पर जेतेबेले बजेट 2025 आछिबो तो बजेट रो रूपरेख केमती रहिबो एथर बजेट रो को वर्ग को गुरुत्व दिया जिवो को दिग को अधिक फोकस करा जिवो विशेष करके जेतेबेले दर दाम बढ़ुची हुए कि साधारण लोक माने विशेष करके मध्यवित्त श्रेणी रो लोक माने बेसी हैरान हेउचंती सेमान को खुश करिबा पई सरकार किछि बड़ा पदक्षेप नै पारंती कि दर्शक बंधु समस्त नजर मध्य रही विशेष करके आयकर सीमा पर छाड़ करने दिगरे सरकार कौन पदक्षेप नेउछंती कौन परिवर्तन करुछंती विशेष करके कृषि सरकार लगातार बजेट में देखु कृषि उपरे फोकस रही से क्षेत्र में सरकार प्रकृत में कौन पदक्षेप नेउछंती कृषक मानक पई एवं कृषि क्षेत्र पई सरकार एथर बजेट रे कौन आणुछंती जहां पर नजर मध्य रही शिक्षा पर सरकार फोकस रही पारे स्वास्थ्य क्षेत्र में फोकस रही पारे विशेष करके आपण देखु
देखंतु जो महिला योजना रही तो से महिला योजनार आहुरी ताकि कि अधिक व्यवहार करि परंती कहीं आम देखु महिला जो योजना गुड़िक रही कौभली भाव में गेम चेंजर होती महिला होती देशर बड़ भोट बैंक तो ताकू आखे रखी महिला को खुश करने की सरकार बजेट रे एथर किसी बड़ घोषणा कर पारती किसी समय आमको अपेक्षा करने को पड़ो आपण मन में जमी रही अनेक प्रश्न आपण मन में जमी उत्कंठा रही जी उत्साह रही आम मन में से उत्साह रही तो अर्थ मंत्रालय में पहुंचले निर्मला सीतारमन ये वर्तमान समय ब्रेकिंग खबर अर्थ मंत्रालय पक्षर अर्थ मंत्रालय राष्ट्रपति भवन जी निर्मला सीतारमन जहाँ रही बजेट परंपरा आपको कही रखुचु राष्ट्रपति भवन रु संसद भवन को जी वर्तमान जो पूरा प्रक्रिया आपको कही रखुचु वर्तमान समय केंद्र कैबिनेट रे बजेट को मंजूरी मिल निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति भवन जी राष्ट्रपति को साक्षात करेंगे और क्रमागत अष्टम बजेट उपस्थापन कर नुआ रेकर्ड रही आज खोल निर्मला पेड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय पाड़ी ये प्रथम पूर्णांग बजेट उपस्थापित हो बजेट उपस्थापन करेंगे निर्मला सीतारमन ये केंद्र सरकार बजेट को कहुच्छी सारा देशर नजर रही विशेषकर अत्यावश्यक सामग्री मूल्य नियंत्रण नहीं सरकार की पदक्षेप नौछंती ताकू चाहि रहिछंती मिडिल क्लास मध्यवित्त एथर मने होची सरकार मुद्रास्फीति एवं टिकस क्षेत्र में अनेक घोषणा करि परंती एवं सबुठारु बड़ उपहार बा गिफ्ट दे परंती टिकस छाड़ आकार में मिलिबार संभावना रही बजेट रे प्रकृत रे जो 7टी पॉइंट को लेकिन आम निश्चित भाव में टिके तर्जमा करबा आयकर छाड़ उपहार दे परंती ताकू नेकी मध्य चर्चा हेउची एवं पेट्रोल डीजल दर्शक बंधु पेट्रोल डीजल सस्ता होई पारे गोटे पूर्व संकेत दि जाइछि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वृद्धि पाइब बजेट नियुक्ति सुजोग वृद्धि करिपारे सेपरि स्वास्थ्य बजेट वृद्धि होबार संभावना रही एवं बड़ कथा होछि आपण जेतेबेले घर किनिबा को चाहउछंती आपनको अधिक टंका देबाको पड़ुछि एणिकी आपनको स्वप्नर घर हुए तो सस्ता हेबाको जाउछि निर्मला सीतारमन हाथ में आपण देखि पारुछंती ये होछि से नाली रंगर ब्रीफ केस रही है नाली रंगर ब्रीफ केस रे कौन रही कहीं बजेट रे ब्रीफ केस व्यवहार आपको किस समय पूर्व जमी कहते ये से ब्रीफ केस जहाँ आमर बजेट ब्रीफ केस व्यवहार रही ये जो परंपरा एवं बजेट इंग्लिश शब्द आसी बजेट ये शब्दर अर्थ सरकार अर्थव्यवस्था को बुझाई थाए आपड़ जानती ये हूँ से ब्रीफ केस जहाँ धरी नाली रंगर ब्रीफ केस सबु वर्ष गोटे नजर थाए एवं ये बजेट आगत होबार परंपरा आपको कही रखुचु स्वाधीनता पूर्वर दशंधि धरी चली आसी बेले यही परंपरा बलवत्तर रही समय बदलवा सहित पेपर रखा जाउतबा ब्रीफ केस रंग रूप बदली एवं भिन्न भिन्न अर्थमंत्री समय आम देखुचु भिन्न भिन्न ब्रीफ केस एवं निर्मला हाथ में जो नाली रंगर ब्रीफ केस आप देखुं दर्शक बंधु नाली रंगर ब्रीफ केस रे कौन रही जहाँ नहीं समस्त भीतर एक प्रकार उत्कंठा रही भारत रे मध्य परंपरा पालन होबार लगी भारत रे भिन्न भिन्न अर्थमंत्री भिन्न भिन्न रंगर ब्रीफ केस बा बैग धरी संसद रे एंट्री करुछंती एवं यार भीतर निर्मला हाथ हलाई अर्थमंत्री देखाउछंती से नाली रंगर ब्रीफ केस को एवं ब्रीफ केस रो रंग डिजाइन को लेकिन अनेक आम देखुचु एक्सपेरिमेंट मध्य होइछि 2019 मसिया तो आप देखुं से नाली रंगर टैबलेट आप देखुं जितेबले 2019 मसीह निर्मला सीतारमन बजेट ये जो ब्रीफ केस को भांगी टैबलेट धरी जहाँ को लेकिन अनेक चर्चा है एवं यहाँ परिवर्तन से दस्तावेज विकल्प भाव में टैबलेट धरी संसद को जाइए वर्तमान देखा कि सही टैबलेट को धरी बजेट आगत करते सेबेठू आरंभ होती पेपरलेस बजेट जुग वर्तमान समय ब्रीफ केस बदल में टैबलेट धरी ये देखु जो रंग डिजाइन को लेकिन अनेक अर्थमंत्री अनेक कहीपर एक्सपेरिमेंट करिसेंती अर्थ मंत्रालय बाहरी वर्तमान समय राष्ट्रपति भवन जाउछंती निर्मला सीतारमन जहाँ रही बजेट आगत होगा पूर्व राष्ट्रपति को साक्षात करेंगे सीधा सड़क आसबे आगत हो बजेट एवं वर्तमान समय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहरी सारी हाथ में आपको देखले जो धरी नाली रंगर टैबलेट धरी आप जानती 2019 मसीह निर्मला सीतारमन बजेट ब्रीफ केस परंपरा को भांगी यहाँ परिवर्ते से दस्तावेज विकल्प भाव में टैबलेट धरी संसद को जाइए बजेट आगत करते सेबेठू आरंभ होती पेपरलेस बजेट जुग आज देखा मिली नाली रंगर से रेड कलर से टैबलेट एवं ता भितर कौन अच्छी कहीं सारा भारत आज अनै बसी बजेट भारत कौन किसी समय पर केंद्र बजेट आसब निर्मला पेढ़ी कौन आसब सामना को जहाँ पर समस्त नजर रोचे आप देखुं जहाँ पूर्व कार्यक्रम रही तो यार भितर निर्मला सीतारमन अर्थमंत्री बर्तमान जाउछंती राष्ट्रपति भवन अभिमुखे एवं राष्ट्रपति को साक्षात करेंगे संसद भवन आसबे उपस्थापित हो आज देशर बहु प्रतीक्षित बजेट एवं उत्कंठा समस्त भितर रही जमती आपको कहती कि
हुए तो 7टी दिग उपरे सरकार एथर फोकस करि परंती सबुटु बड़ रहउची कि आयकर छाड़ उपहार देई परंती कि काहेकि ना आपण जानती सरकार नूतन व्यवस्था रे वार्षिक 10 लाख टंका पर्यंत आय को टिकस मुक्त करि परिबे 15 लाख रु 20 लाख मध्य आय को हुए तो 30% बदल में 25 बा 25% नूतन टिकस स्लैब रे आनिबा पई घोषणा हेबार संभावना रही। यह व्यतीत नूतन जो व्यवस्था रही बेसिक छाड़ सीमा 5 लाख टंका को वृद्धि हुए तो करा जाई पारे। आ जदि ए घोषणा हेले अधिक रु अधिक नूतन टिकस व्यवस्था रे भागीदार मध्य हेबे। प्रोफेसर अमरेंद्र दास आम सहित अधिक आलोचना जोड़ी होती अर्थनीति विशेषज्ञ। प्रोफेसर दास आपको स्वागत। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन 2025-26 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करेंगे। तो बड़ प्रश्न होची आपनक भितर जतिक उत्कंठा रही मो भितर सेतिक उत्कंठा रही सारा देशवासी भितर सेतिक उत्कंठा रही बजेट रे काहाको कौन मिल पारे विशेष करके मिडिल क्लास एथर मध्यवित्तक ऊपर टिकस बोझ कमिबो ना निम्न आय वर्गक पई कौन विशेष रहिबो विशेष कर एथर बजेट केमति रहि पारे बोले आपण अनुमान करूछंती। बजेट एक्चुअली कहले केवल आम जो कर माने नीति उपरे केवल फोकस करबा टैक्स पॉलिसी ऊपर फोकस केवल नहीं अन्य ऊपर बध्य आम आलोचना कर परिबा। किंतु जेहेतु आपण प्रथमे कहले जे साधारणतः मिडिल क्लास जो माने टैक्स दियंती समस्त टिके चाहंती जे आमको केमिति टिके कम टैक्स दबा बा टैक्स बोझ टिके केमिति कमेबो ता सहित टैक्स प्रोसेसटा भी केमिति सिंप्लिफिकेशन हबो तो ता ऊपर समस्तଙ୍କର लक्ष्य थाए। तो आम देखुचे जे वर्तमान कौन होचे जे हमर अप टू 3 लाख टंका पर्यंत हमको किछि टैक्स दबाको पड़ू नाही। तापर आम जतार 5 लाख रु हमर जो देखुचे जे 3 लाख पर्यंत किछि टैक्स नहीं। तापर 3 लाख रु 7 लाख टंका हमर होची 5% टैक्स अछि। तापर 7 रु 10 लाख टंका पर्यंत सेटा होची 10% टैक्स रहउची। तापर 10 लाख रु 12 लाख 15% टैक्स रही। 12 लाख रु 15 लाख 20% टैक्स आउ रहा 15 लाख रु 50 लाख 30%। आउ तापर जो माने 30% देबे 50 लाख रु कोटी टंका पर्यंत से माने 30% देबे किंतु तापर गोटे 10% सरचार्ज रहउची। तापर सेमंतिका कोटी रु जो माने 2 कोटी तांग परे से 30% टैक्स किंतु तापर 15% सरचार्ज लागुची। आ जो माने 2 कोटी रु अधिक दउचंदी से माने 30% टैक्स देबे तापर गोटे सरचार्ज रही 25%। तो प्रथम कथा जो एग्जाम्पशन लिमिट आम देखा जे 3 लाख टंका पर्यंत आमर कौन सी टैक्स नहीं आपर ठार आरंभ हो 5%। तो सहीटा को समस्ते आशा करेंगे कारण आजिकल 3 लाख टंका माने गोटे एमती बड़ आय नुहे तो तेणुक टैक्स देवाटा प्रकृत में लोक बाधे। तेणु यहीटा को जब 3 रु 5 लाख टंका इवन 4 लाख 5 लाख टंका एते से माने प्रथम थर पढ़े पारे ना तो 3 रु जब 4 लाख भी करती ताहले मध्य बहुत भल रहिबा सेटा हला प्रथम। तापर द्वितीय कथा हला जे आमे जो माने टैक्स दउचंती से संपर्क प्रोफेसर दास आगो को आलोचना करबा साधारण लोकन को आरंभ करके कॉर्पोरेट जगत पर्यंत एनी समस्त गोटे उत्सुकतार सहित अपेक्षा करिसंती बजेट रे महंगा नियंत्रण नै किछि बड़ पदक्षेप निया जाय पारे कि सरकार मुद्रास्फीति एवं टिकस क्षेत्र रे लोकन को पई किछि बड़ घोषणा करि परंती कि एवं सबुटु बड़ उपहार स्वरूप टिकस रिहाती आकार रे मिलिबार कुहा जाउछि संभावना रहिछि। विभिन्न क्षेत्र पई कोन घोषणा कर जाय पारे बजेट रे कोन रहिछि जहा को नै कि समस्तक भितरे गोटे उत्कंठा रहिछि जानिबाकू आमे संपर्क आगो को चर्चा करिबा आलोचना करिबा किंतु वर्तमान समय होछि गोटे छोटो ब्रेक नै जिबा खूब शीघ्र फेरिबा। ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती 9 जन दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा आमे अछु ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती 9 जन दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा आमे अछु ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछु ना। राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिंट सृष्टि होइछि विवाद। सोनिया कहते राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पोर थिंग थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग बोली अभिहित करथिले राहुल गांधी। उभयंकर मंतव्य को प्रधानमंत्री निंदा करने सहित कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बोली आरोप लगाइछन्ति।
वर्तमान सुधा 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइले राशन कार्ड एक कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते कंट्राक्चुअल चाकरिया अर्थात 11 ରୁ 12,000 दरमा पाउथिबा सरकारी चाकरियांकर राशन कार्ड कटिबो नाही। स्वल्प वेतनभोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबार आवश्यकता नाही। एनएफएस नियम अनुसार ग्रामांचल में जार मासिक रोजगार 10,000 टंका थिबो सेमाने राशन कार्ड फेराइबे नाही। सुभद्रा योजना हिताधिकारी आगामी दिन में मुद्रा योजना भी लाभ नहीं पारे। मुद्रा योजना किशोरी युवती 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे ऋण मिलुछि। आ मुद्रा योजना ग्यारंटीर आवश्यकता पड़ुवा बेले सुभद्रा अर्थ ग्यारंटी भाव में काम करिबो बोली कहा जाउछि। महिला व्यवसाय बाबद में जणाइबाकू सुण सुभद्रा कुह सुभद्रा और सुभद्रा सेतु आरंभ करिछि महिला और शिशु विकास विभाग। पुणी ब्रिक्स देश समूह को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धमक डॉलर विकल्प चिंता कले किंबा विकल्प आउ मात्र किछि समय अपेक्षा रहिला। किछि समय पर आसीबो बहु प्रतीक्षित बजेट। बजेट रे कहा जाउछि एथर किछि बड़ घोषणा करा जाई पारे। आपण निश्चित भाव रे उत्साह थिबो कोन बड़ घोषणा करा जाई पारे, महिलांक पई कोन घोषणा करा जाई पारे। विशेष करके बजेट ऊपर सबुठु बेसी आशा थाए आयकर दातांकर। देश रे दरदाम वृद्धि, उच्च सुधार, विनियोग क्षेत्र में उत्पादन ह्रास एवं प्रतिकूल वैश्विक परिस्थिति जो आप जानती देशर अभिवृद्धि हार ह्रास जो साधारण लोक विशेष करके मिडिल क्लास फैमिली मध्यवित्त श्रेणी हाथ में अर्थ कम, तेणु क्रय शक्ति एवं किणाकिणी कम, चाहिदा कम हेले जोगाण कम हेबो, उत्पादन ह्रास स्वाभाविक। सरकार एप्रति हुए तो यत्नवान होई कर ह्रास बा उत्पादन वृद्धि पाई व्यवस्था करि परंती। एवं 2024 बजेट रे मोट व्यय परिमाण आप जानती 48.21 लाख कोटी टंका थिला, जहां 2023-24 तुलन में 8.5% अधिक। चलित बजेट रे मोट व्ययर परिमाण 50 लाख कोटी टंका हेबा नै आशा करा जाउछि। एवं बड़ कथा होछि कि राष्ट्रपति भवन अभिमुखे जाइछंती। राष्ट्रपति भवन टू संसद भवन आसीबे निर्मला सीतारमन। ये होछि वर्तमान समय ब्रेकिंग खबर एवं जो खबर को आपन को लगातार भाव में देखाउछु। आ मात्र किछि समय अपेक्षा निर्मला सीतारमन उपस्थापन करिवे एथर बजेट। एवं जहां रहिछि बड़ कथा कि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन बजेट 2025 पूरा कार्यसूची उपर नजर पकाई नेबा जेतेबेले सकाळ 8:30 रे निज निवास रु नॉर्थ ब्लॉक को अभिमुखे बाहरी थिले एवं वर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे जाइछंती। राष्ट्रपति को बजेट रो कॉपी प्रदान करिवे निर्मला सीतारमन एवं समस्तंकर अपेक्षा रहिछि काहेकि ना संसद रे तापरे फेरिबे डॉक्टर अमरेंद्र दास समस्त लगातार भाव में अच्छा। प्रोफेसर दास जिते समस्त को नजर रोचे आयकर छाड़ा गोटे बड़ गिफ्ट दे पारती, बड़ उपहार दे पारती। सहित आम जो साधारण मध्यवित्त श्रेणी लोकों भितर आलोचना करवा मिडिल क्लास फैमिली समस्त गोटे एक्सपेक्टेशन था एथर बजेट रू कहीं दरदाम हु हु बढ़ुची। दरदाम नियंत्रण पर सरकार मिडिल क्लास को खुश करने की एथर बजेट रे किसी बड़ उपहार दे पारती कि बड़ घोषणा कर पारती कि मध्यवित्त श्रेणी की। हाँ से कथा जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिटा जदि से बढ़ेबे जे जो ए 3 लाख रु जोटा जदि आउ टे बढ़े 4 लाख भी करेंगे कहना 3 लाख रु 7 लाख पर्यंत 5% टैक्स देवा पड़ुछि ताको जदि बढ़ेबे ताहले भल हबो। तापरे सबुठ बड़ कथा कौन हम जे एबे जो माने टैक्स दौरान से बेले बेले मल्टीपल सोर्स रो इनकम रोची। तो धरा जो किए शेयर मार्केट इन्वेस्ट करुच्ची आउ किए अन्य माने कंसल्टेंसी करुच्ची आउ किए दरमा पाउची तो मतलब मल्टीपल सोर्स रो इनकम आसुची। तो आमर टैक्स माने फाइलिंग टा टिके कॉम्प्लिकेटेड है जाए आईटीआर 1 करबा कि 2 करबा कि अन्य कौनस करबा तो ताको नै कि जो रहउची जदी सब गुडाक मिसै दे कि गोटे प्रकार आईटीआर करा जिवो आ सेटा को अति सिंपलीफाई कर प्रोफेसर दास आपण पाको फेरुची मो सहयोगी बर्तन अभिषेक न्यूज रूम रु जोड़ी हेलेनी एवं सिक्त राजीव साहू अर्थनीति विशेषज्ञ मध्ये हम सहित जोड़ी हेलेनी। सिक्त राजीव साहू मु प्रथमे आपण पाको आसीबा को चाहिबी आपण को अनेक अनेक स्वागत करबा को चाहिबी। बजेट को नै कि हम भाबुची आपण मध्ये ठीक एम्ति उत्साहित थिबे एथरो बजेट रु कोन आसी पारे आपण कोन लागुची एथरो बजेट रे काहा को कोन मिलि पारे मध्यवित्तक ऊपर टिकस बोझ कमिबो ना निम्न आय वर्गक पई कोन विशेष रहइबो बोले आपण भाबुचंती ये गोटे साध लोकाभिमुखी बजेट हेबो बोले आपण एक्सपेक्टेशन करूछंती की देखुचु
जे गोटे हूँ मध्यमित लोक मैंने निश्चय एथिरु लाभवान हेबे बोली यथेष्ट संभावना एवं यथेष्ट सूचना मध्य रोची एवं यही सूचना बेले आम जब देखा कौन मिल पार मध्यमित आपड़ जदि एनालिसिस करेंगे जे विगत अनेक वर्ष है रियल इनकम स्क्वीज होची जो जेतिकी दरमा बढ़ुची ताठू बेसी इन्फ्लेशन एवं जो टैक्स जेतिकी दवा कथा सेटा बढ़ी बढ़ी चली एवं तार नमूना आपण पाइबे जे आमर जो पर्सनल टैक्सेशन आज ए शेयर ऑफ टोटल डायरेक्ट टैक्स सेटा बढ़ी बढ़ी चली एवं कॉर्पोरेट टैक्स टी कमी कमी आसुची तेणु सेटा जदि आमे जो देखिबा प्रॉब्लम एवं आमे जो देखिबा जे कंजम्पशन जोटा अफेक्ट होची कारण ए मिडिल क्लास माने अधिक रु अधिका खर्च करथांती से माने गोटे 360 डिग्री खर्च मध्य करथांती तेणु आमर जो जो प्रॉब्लम अच्छी जो प्रकार आमर प्रेस्क्रिप्शन अच्छी जे मिडिल क्लास को हाथ रे अधिक पैसा रहिबा निहाती दरकार एवं सेथिपई सरकार द्वारा प्रथम कथा होची जे जदि तांको टैक्स कट एवं टैक्स कट मु भाबुची जदि गोटे सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलिबो ताहले एटा साहाय्य करिवो से मिडिल क्लास को एवं एम्प्लॉयमेंट कंजम्पशन पाई मध्य सेटा साहाय्य करिवो किंतु ता संगरे हमर जो माक्रो लेवल जो जो सिचुएशन अच्छी आम जो देखा आमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किभली भाव में बढ़ेवा पड़िबो एवं केवल सरकार जोटा कि गोटे रेकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर राजीव साहू टिके आपन को टिके अटकेबा को चाहिबी वर्तमान जो ब्रेकिंग खबर टिके हम दर्शक मान को दबा को चाहिबा वर्तमान राष्ट्रपति भवन में पहुंची सरलेनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन अष्टम थर पई बजट उपस्थापन करबा को जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ये केंद्र सरकार को ये बहु प्रतीक्षित बजट उपरे दर्शक बंधु सारा देश रो जेतले नजर रहिछि तो यार भितरे राष्ट्रपति को कॉपी प्रदान करिवे निर्मला सीतारमन तापरे संसद भवन फेरिबे एवं बजट उपस्थापन करिवे बड़ कथा होछि बजट उपरे कहार नजर रहिछि बजट रे मिशन शक्ति जननी सुरक्षा योजना मातृ वंदना योजना भली महिला केंद्रिक स्कीम गुडी को व्यवहार रे सरकार बढ़ाई परंती कि जहा को नेकी मध्य चर्चा होछि पूर्व बजट रे आपण जानंती ई स्कीम गुडी को पई 3 लाख कोटी टंका आवंटन कर जाइतिला गरीबन को ऊपर सरकार होय तो गुरुत्व देई परंती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पई होय तो व्यवहार बढ़ी परे सेही परि देशर अर्थनैतिक अभिवृद्धि तथा शिल्प क्षेत्र को बल देबा लागि रियल इस्टेट अणु क्षुद्र मध्यम शिल्प एआई सह पुंजी निवेश को अधिक फोकस करि परंती सरकार एवं राष्ट्रपति को बजट कॉपी प्रदान करिवे निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति भवन में पहुंची सारिछंती मो सहयोगी लगातार भाव में अभिषेक अछंती अभिषेक आजिर बजट ऊपर समस्त को नजर रहिछि एथरो बजट रु कोन आसी पारे निर्मला का पेडी रु कोन देखिबा कि बड़ उपहार देई परंती देशवासी को विशेष करके आपण आयकर कथा कोंतु सीमा छाड़ कथा कोंतु विशेष मिडिल क्लास एवं गरीब समस्त भितर गोटे उत्कंठा रही स्वागत आम जी कहवा कि अल्प समय भितर आसपा जाऊँगी से 2025 बजेट अष्टम थर पर निर्मला सीतारमन बजेट पेश करने जाऊँच सबू वर्ग भितर से आशा आकांक्षा रही आम जी कहवा कि जो भाव में अर्थनैतिक विशेषज्ञ मैंने एवं पैनल कहते कि मिडिल क्लास कथा सबुठार अधिका चर्चा होची एवं सबु दर में आम जी कहवा कि सबू वर्ग जो भाव में गोटे आम कह दरदाम वृद्धि होती तो ताकू चेक करने कारण आम जी कहवा यो जिनसटी यही जो बजेट आसापे जाऊँगी मोदी 3.0 बा मोदी सरकार जो तृतीय पाली आसी तार यह पूर्णांग बजेट तो या नहीं सबुआडे ये चर्चा होची कारण कौन आने जाऊँगी कारण जमी आम कहवा कि महंगा अवस्था चली सबुआडे दरदाम वृद्धि होती लोकों पकेट्रे पैसा ना तो से पैसा केमिति पाखे रमिति टैक्स कमा हम कि अन्य जो टारिफ रही है केमिति कमिबो बा को एक्साइज ड्यूटी रही तेल दर कथा बहुत उठुची कि तेल दर कमी पारे कि तो सबू सेक्टर आम कहीपर कि सरकार को जो क्वेश्चन रही है आम कह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कथा जब आम कहवा ताले से आड़े आम जब कहवा कि डिफेन्स सेक्टर में कौन अधिका स्पेंडिंग रही पारे एजुकेशन सेक्टर में बा शिक्षा सेक्टर में कौन रहिबो मेडिकल आम जब हेल्थ केयर सिस्टम जब कहवा बड़ डिजीज गुड़ाक कौन सरकार मेडिसिन बा ड्रग्स रे कौन रहिबो तो एमिति सबू सेक्टर रही स्वागतिक आम जिन कहीपर कि यही जो जिनसटी रही था कि सबू वर्गर लोकों जदि आम पेट्रोल डीजेल कथा कह एक्साइज ड्यूटी कथा कहीपर इलेक्ट्रोनिक्स जमीती कि मेक इन इंडिया बा आम कह सरकार डिजिटल इंडिया कथा कहते तो आम मोबाइल फोन कथा कहीपर लैपटॉप कथा कहीपर तार दर कमिबार जो चांसेस रही तो सही जिन रही आप कृषि कथा कहते कृषि बजेट सरकार गोटे आम कह गोटे बड़ सेक्टर रही है तापर आसवा रेल रे जमी आगुरी रेलवे बजेट अलग होता एबे रेलवे बजेट मिसिक आस तो रेलवे बजेट कौन हो पारे जमी कवच सिस्टम कथा कहुच्छी आम 2024
कथा कहबा अनेक रेल दुर्घटना घटीला तो कवच सिस्टम जो एंटी कोलिजन सिस्टम ता ऊपर सरकार किसी फंड देवे कि आपण जेमती कहउतले महिला कथा कहबा जेमती डबल इंजिन सरकार चलछि तो महिला मानक पई सरकार कोन करिवे शिक्षा रे कोन करिया पई जाउछंती जननी सुरक्षा योजना रही महिला मानक पई अन्य योजना रही तो सेथरे पांठी वृद्धि हबो कि तो याकू नै कि जो क्वेश्चन गुडी कर रही तो आमे एई सब जिंस टिके स्वागतिका मु कहया पई चाहूछि कि जो 11टा बेले जो निर्मला सीतारमण जो बजेट आनिया पई जाउछन सेथरे अनेक गुरुत्वपूर्ण जिंस रही जोटा कि साधारण जनता अपेक्षा करी रही कारण एबे जो दरदाम वृद्धि होईछि बजेट उपरे कहार फोकस रहिबो बेकारी समस्या दूर करबा को नियुक्ति बढ़िबो कि जहा पर मध नजर रही एवं समस्तक भितर गोटे एक्सपेक्टेशन बढ़िलानी श्रीयुक्त राजीव साहू 2024 बजेट रे मोट व्ययर परिमाण 48.21 लाख कोटी थिला जहा 2023-24 तुलन रे 8.5 बा 8.5% अधिक चलित बजेट रे मोट व्यय परिमाण 50 लाख कोटी टंका हेबा नै आपण केमती देखुचंती एवं जेमती किसम पूर्वर कहिथिले आयकर छाड़ उपहार से दिगरे सरकार किछि गोटे बड़ सरप्राइज देई परंती कि देखु मुझे गोटे 2 मिनिट नेबी बुझाई जे आमर बजेट्र साइज बढ़िबा निहाती दरकार एवं प्रत्येक वर्ष प्राय आपण जब देखिए 10 ରୁ 12% बजेट्र साइज बढ़ी थाए एक्सपेंडिचर मध्य से अनुपात रे बढ़ी थाए एवं सेठी इश्यू आसुची जे आमर जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करिया पई कि प्रकार मेजर नौचंती एवं तार गोटे बड़ दिग आसुची जे आमर टैक्स कलेक्शन केते बढ़ुची एवं यही टैक्स कलेक्शन आम जिते बढ़ेवा को चेष्टा करूँ एवं टैक्स रेट बरे किसी बढ़ेवा को चेष्टा करूँ सेतेबेले आमे पुणी आसु से प्रॉब्लम को जे लोकों ऊपर टैक्स रो बर्डन बहुत अधिका होची एवं आमे जदि देखिबा मूल प्रश्न जे हाँ आमे 10 ରୁ 12% 48 माने आमे हुए तो 52-53 लाख पर्यंत एक्सपेंडिचर जाई परिबा एवं आमर फिस्कल डेफिसिट को किबळी कंट्रोल करिबा किंतु सेथिरे आमर जो प्रायोरिटी आपण मध्ये कहले गरीब लोकों को किबळी सुविधा दिया जाय परिबो गरीब लोकों का हाथ रे पैसा रही परिबो गरीब लोकों को तांकर जो एस्पिरेशन ताकू किबळी मीट करा जाय परिबो सेटा निश्चय सेतिपय विभिन्न योजना ए सरकार लगातार भावे 10 वर्ष रो अधिका जो सरकार अच्छी से लगातार भावे फोकस करूचंती एवं कंटिन्यू मध्य करूचंती तो सेटा गोटे बड़ जिनस द्वितीय कथा है जे आमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो खर्च निहाती दरकार जोटा कि गोटे सब्सटेंशियल इंक्रीज करिसेंती सरकार आमे 10-11 लाख टंका रे पहुंचीचु 10-11 लाख कोटी टंका रे पहुंचीचु एवं ता संगे आमको आउ कौन कारण आमको विकसित भारत हवा पाई जो लक्ष्य अच्छी से आमको गोटे 8% रे ग्रो करिया को पड़िबो एवं जहाँ वर्तमान आम जदि गत वर्ष देखा 6.3-6.4 एस्टिमेट करुँच एवं आमको वर्तमान भी देखा पड़ो जो कंटेक्स्ट रे आम अच्छु पोस्ट कोविड पोस्ट वार बा ड्यूरिंग द वार एवं जो ग्लोबल पोजिशन अच्छे आम से कि प्रकार आमर अचीवमेंट मु कहबी निश्चय ये अचीवमेंट गोटे भल अचीवमेंट जदि इकोनॉमिक सर्वे को आम देखा एवं ता संगे मुझे कहते आपन को जे आमर दरकार वर्तमान कॉर्पोरेट माने अधिका प्रॉफिट करिसेंती तेणु कॉर्पोरेट माने मध्य इन्वेस्ट करिबा दरकार एवं आमर वर्तमान समस्या जोटा आम जब समस्या को जीवा जे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को आम अधिका प्रोत्साहन दबा कारण आमर जो शिक्षित युवक युवती माने अछंती तांको किबळी अधिका चाकरी मिलिबो एवं सेमानंक पई जते स्किलिंग एम्फासिस दिया जिवो सेमाने जते स्किल लेबर हेबे सेमाने सेतिकी पारंगम हेबे तांकर चाकरी क्षेत्र रे आ गोटे कथा मु कहबी जे गोटे बड़ थ्रेट आछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आमर गोटे थ्रेट हिसाब रे जेतु आसुची हमें राजीव साहू जानबा को चाहिबे अर्थनीति विशेषज्ञ भाबरे वर्तमान प्रचलित आयकर आईन को सरल करिबा ए दिगरे सरकार अधिक फोकस करि परंती कि काईना वर्तमान आयकर आईन टिके जटिल एवं एहार पृष्ठ एते अधिक जे आकु पढिबा बुझिबा जाकु नै कि साधारण लोक एक प्रकार चिंता रे होचंती से दिगरे सरकार किछि बड़ पदक्षेप नै परंती कि एथर बजेट रे देखो आपण जदि रियलिटी को जीवे विगत 10 वर्ष भितर आयकर रिटर्न फाइलिंग बा पेमेंट अनेकांश सरल करा जायछि एवं जोटा मेजॉरिटी लोक माने अछंती
सेमाने रिटर्न फाइल करने पे कौन सी असुविधा भोग करना किंतु मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जितेबाला थिबो सेतेबाला आउ टिके कॉम्प्लिकेटेड कारण देखंतु आपन को बैलेंस करिया को पड़िबो किंतु सरलीकरण गोटे प्रक्रिया जोटा कि कंटिन्यूअस वन एवं जेहेतु आम टेक्नोलोजी माध्यम रे वर्तमान अनेक जिनस एड्रेस करूँ सरलीकरण को मध्य उत्साहित करा जिवा संगे संगे आम से किसी देखा किंतु वर्तमान प्रॉब्लम होची जे जोटा आमे अर्थनीति रे आमे देखुचु जे लोकों को हाथ रे पैसा आसीबा दरकार एकदम प्रधानमंत्री आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा मते कहले सिक्त राजीव साहू जेतु आपण अर्थनीति को बेस भलो भाबरे अति निकटरु देखिचंती जहा मते प्रधानमंत्री कहचंती लोकों को हाथ रे टंका रहू लोकों को हाथ रे लक्ष्मी रहंतु एवं जो कथा प्रधानमंत्री कहचंती आज हुए तो बजट रे ताहा रिफ्लेक्शन होई पारे प्रोफेसर अमरेंद्र दास समस्त को नजर रही पेट्रोल डीजेल उपर कहीं दर जिते उच्चा रही लोकों को बाधुची ए क्षेत्र में जो चर्चा होची कि सस्ता हो पारे पेट्रोल डीजेल एथर पेट्रोल डीजेल सस्ता हो पारे बोली जो सीआईआई रो सुपारिश को ग्रहण करी सरकार मुद्रास्फीतिर बोझ कमाइबा पई उत्पाद शुल्क ह्रास करि पारंती कि जहां पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य ह्रास करि परिबो वर्तमान पेट्रोल उपर आपण देखंतु 19 टंका 90 पैसा और डीजेल उपर 15 टंका 80 पैसा उत्पाद शुल्क लागू होची तो से दिगरे कोन आपण भाबुछंती नहीं मोर जहाँ व्यक्तिगत माने अनुमान जे पेट्रोल उपरे टैक्स सरकार कम करेंगे नहीं ये जे सरकार बर्तमान गोटे क्लीन फ्यूएल आड़ को ट्रांजिशन पे लक्ष्य रखुच्च जे आम इलेक्ट्रिक व्हीकल आड़ को केमती जावा आ पेट्रोल डीजेल व्यवहार केमती कम करवा से गोटे तेणु से माने पेट्रोल प्राइस डीजेल प्राइस कम कर कौन सरकार आग्रह रहा द्वितीय कथा है जे सरकार जो राजस्व संग्रह करुँच देखिए जे आमर जो अणसंगठित क्षेत्र जेहेतु कर विशेष भाव में संग्रह हो पार ना तो पेट्रोल और डीजेल गोटे बड़ माने राजस्व उत्स रोचे उभय केन्द्र और राज्य सरकार मानी तो तेणुक से पेट्रोल और डीजेल कर संग्रह करने विशेष आग्रह रहा तो आबे जो काली मुझे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ुली तो इकोनॉमिक सर्वे जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन आड़ को माने जीवाई बहुत गुरुत्व दि जाए तो से क्षेत्र में आम पेट्रोल और डीजेल आप देखते जमी डीजेल कार बंद कर दिगला आउे सेमतिका वर्तमान सब प्रकार सरकार चाहिए जे आम केमी लोक मानू अधिक इनसेंटिव दवा क्लीन फ्यूएल एनर्जी आड़ को जो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल आड़ को आम अधिक ट्रांजिशन करवा आउ से प्रकार टेक्नोलोजी तो हुए तो सब्सिडी मिल पाए जदि आउ अधिक किसी परिवर्तन करते जो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते पेट्रोल डीजेल मोर जहाँ व्यक्तिगत अनुमान जे हुए तो किंतु आमे टिके टीवी स्क्रीन ने प्रोफेसर दास से दृश्य देखाबा को चाहबो से समस्त को नजर रही जेतबळे निर्मला सीतारमन को से नाली जितेबाला समस्त को नजर रही से नाली लैपटॉप रु कौन आसब तो बड़ कथा होची कि वर्तमान देखा कि राष्ट्रपति भवन में पहुंची सारी राष्ट्रपति को कॉपी प्रदान करेंगे तापर संसद भवन को फेरबे निर्मला सीतारमन बजेट उपस्थापन करेंगे एवं कहुचे बजेट बेस गुरुत्वपूर्ण कहीं जीडीपी वृद्धि बजेट रे विशेष योजनार आवश्यकता रही मध्यवित्त वर्ग ह्रास से आय वृद्धि नहीं विशेष पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही बड़ कथा होची कि मात्राधिक कर जो धनी गोष्ठी जेहेतु देश छाड़ी पलायन रोकबार आवश्यकता रही टैलेंट पुल को देश में रखा स्टार्टअप उपर सरकार गुरुत्व दे पारती आपन जो विजुअल आम देखा राष्ट्रपति भवन में पहुंची जाइछंती निर्मला सीतारमन राष्ट्रपति को कॉपी प्रदान करेंगे एवं ये क्षेत्र में समस्त भीतर जो उत्कंठा रही राष्ट्रपति भवन में जहाँ रही परंपरा और से परंपरा अनुसार पहुंची जाइछंती निर्मला सीतारमन पहुंची सारी आप पूरा चित्र देखिपुंट राष्ट्रपति भवन गोर चित्र साधारण जनता आरंभ करके सबु वर्गर लोके अपेक्षा कर बजेट लोक सुहाइब कि नहीं बजेट को लोकाभिमुखी करने उद्देश्य समस्ते चाह रही सरकार प्रकृत में कौ दिग पर फोकस करती बड़ कथार भिजुआल आप देखिपुंट राष्ट्रपति भवन में वर्तमान निर्मला सीतारमन पहुंची सारी सरकार चाहिए लोकों हाथ में टंका रहू फल से क्रय करने सामर्थ्य बढ़ तो ता भितर जना पड़ुची राष्ट्रपति को आपण देखिपुंट राष्ट्रपति भवन पूरा दृश्य देखिपुंट अर्थमंत्री पहुंची सारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान करेंगे कॉपी प्रदान करेंगे कहीं 2025-26 आर्थिक वर्ष बजेट बजेट मोदी 3.0 सरकार लगातार अष्टम थर बजेट उपस्थापन करेंगे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन बजेट आसवा पूर्व शुक्रवार पार्लियामेंट उपस्थापन होइछि आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो कहुई चलित आर्थिक वर्ष में जीडीपी 6.3% रु 6.8% मध्य रही पारे देशर अभिवृद्धि हार जीडीपी एवं
5.4% रही 2 वर्ष में सर्वनिम्न होता बेले 2025-26 आर्थिक वर्ष में अति कम 1% वृद्धि रखिंट सरकार एवं केमिति अभिवृद्धि उपरमुहा हेब से नहीं सर्वे रिपोर्ट में कहुई आभ्यंतरीण अर्थनीतिर भित्ति बलिष्ठ थिबा बेले बेकारी हार कमुछि मुद्रास्फीति धीरे धीरे नियंत्रण होउछि फल खाउटी चाहिदा बढ़िबा सह बजार पूरा देखिबा कि चलतक्षम रहिबो एवं आपण देखि पारुछंती राष्ट्रपति भवन में पहुंची सारिछंती निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे पूरा कॉपी कहीं एथर बजेट रे को दिग को फोकस कर जहाँ पर समस्त नजर मध्य रोचे बड़ कथा हूँ कि एथर बजेट रे कौन आसपे जमती कि पूर्व मो सहयोगी अभिषेक कहते रेल बजेट रे कौन मिल पारे आम जब ओडिशा कथा कहबा रेल बजेट रे ओडिशा को मिल कौन जेहेतु डबल इंजिन सरकार थी लोकंर डबल एक्सपेक्टेशन बढ़ी जाइए पूर्व आप जानते रेल बजेट पृथक पृथक भाव में उपस्थापन होता किंतु 2016-17 आर्थिक वर्ष साधारण बजेट सह रेल बजेट को मिसाई दिगला 17-18 तत्कालीन अर्थमंत्री स्वर्गत अरुण जेटली साधारण बजेट सह रेल बजेट को मिसाई उपस्थापन करथिले एवं सेबे ठारू रेल बजेट एवं साधारण बजेट मिलित भाव में उपस्थापित होउची जदि आमे रेल बजेट को आकलन करबा 2009 रु 14 मसिया भितरे रेल बजेट रे ओडिसा को हाराहारी वार्षिक 838 कोटी अनुदान मिलिथिला एवं 24-25 रे 10,536 कोटी टंका अनुदान एथर केते अनुदान मिलुची काहेकि दीर्घ 24 वर्ष परे समस्त नजर रही ओडिशा रे सरकार परिवर्तन होइछि उभय राज्य केंद्र रे बीजेपी सरकार रही अश्विनी वैष्णव ओडिशा रु सांसद अछंती चलित रेल बजेट रे ओडिशा को प्राधान्य दिया जाय पारे बोली राज्यवासी आशा रखिछंती एवं आपण देखि पारुछंती राष्ट्रपति भवन रो पूरा दृश्य देखि पारुछंती अर्थमंत्री पहुंची सारिछंती मो सहयोगी अभिषेक वर्तमान समय अछंती अभिषेक आम दर्शक मानक आपण टिके टचुआल माध्यम से दृश्य देखांतु प्रकृत रे एथरो साधारण लोकंक पई कोन आसी पारे एवं कोन आपण देखाइबा चाहिबे आम तो होते कि रेलवे बजेट में अधिका ओडिशा को किसी मिल पारे कारण जमी डबल इंजिन सरकार अच्छी जमी कि डबल इंजिन सरकार अच्छी बोले आम रेलवे बजेट में अश्विनी वैष्णव कथा आप कहले तो आउ गोटे जिन रही कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट जमीती कि भारतमाला प्रोजेक्ट रही तो यही सब जिन रही कि एवं मुख्य दुईटी जिन जोटा कि सकाळू चर्चा हो काली ठारू चर्चा हो कि जोटा इनकम टैक्स कथा आयकर छाड़ कथा और द्वितीय कथा जोटा कि तेल दर कमी पारे तेल दर कमी पारे बोली एक्सपर्ट कहते कमी न पारे किंतु एइथपाई कमिवा कथा कहा कारण जो दर रही आम जब कहवा कि तेल दर कमिले तार इफेक्ट अन्य सब जगार पड़ी था एवं जितेबाला कि तार रेटा जो अन्य दर बा आम जो नीतिदिनिया जो जिन किनी था तार इफेक्ट पड़ी था तो तेल दर कमिया कथा मुझे कहि और टैक्स कथा कहि जदि आम मुख्य कहवा कि एबे जो आयकर छाड़ रही सीमा तो तार कौन चेंजेस होगापी जाऊँगी दर्शक बंधु एबे 0 ରୁ 3 लाख टंका जाए 0 रही किसी टैक्स देवाई पड़ोनी 3 ରୁ 7 लाख टंका पर्यंत 5%, 7 ରୁ 10 लाख पर्यंत 10%, 10 ରୁ 12 लाख 15% और 12 ରୁ 15 जाए 20 और 15 लाख ରୁ ऊर्ध्व जाए 30। तो एबे जहाँ कहा जाउची कि बजेट जो लोकाभिमुखी होगा जाउची जो भाव में कल प्रधानमंत्री मोदी कहले माँ लक्ष्मी को प्रार्थना कर आरंभ कले तो माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रही जोटा कि साधारण जनता चाहूँगी जो मैंने टैक्स दौरान से जो चाहूँगी तो यही जगह 10 लाख पर्यंत नील रही पारे 10 लाख पर्यंत टैक्स छाड़ कर पारे जोटा कि बहुत आलोचना होची एवं आउ गोटे जिनस जोटा कि आलोचना होची जो 15 लाख रु ऊर्ध्व जो 30% रही जेहेतु कि 15 लाख रु 20 लाख आम कहवा से स्लैब अधिक लोक रोचन तो यही जगह गोटे नुआ 25% टैक्स गोटे नुआ स्लैब इंट्रोड्यूस हो पारे तो ये दुईटी जिनस रही जोटा कि 10 लाख पर्यंत छाड़ हो पारे एवं गोटे नुआ 25% गोटे नुआ टैक्स स्लैब से इनक्लूड हो पारे तो ये दुईटी जिनस रही जोटा कि बहुत चर्चा होची एवं राजनीतिक विषय आम कहवा अर्थनीतिक विशेषज्ञ मैंने से कथा कहते कि आयकर छाड़ सीमार ये दुईटी बड़ चेंजेस हो पारे तापर जो कथा मुझे कहती कि पेट्रोल और डीजेल दर कहीं कमे और कमिले कौ जगह जो उत्पाद शुल्क कथा कहला तो से उत्पाद शुल्क कथा मुझे बुझापी चाहूँगी कि जितेबाला गोटे तेल आसी थाए तो आम जो पेट्रोल पंप रु जाइए साधारण जनता जो तेल किनी था तो आम जब कहवा कि यहाँ जो तार जो रेट रही कि जो डीलर पाखर आम जा तेल किनी था से डीलर पाखे टोटाल जदि आम जो जनवरी 1 तारिख कथा कहवा तो 55 टंका 8 पैसा रही था जो डीलर पाखे जो तेल जो डीलर किनी थाए तापर उत्पाद शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी जोटा कि केंद्र सरकार नहीं थांती से एक्साइज ड्यूटीटा पड़ी थाए 19.90 तापर रहिला एडिशनल डीलर कमिशन जोटा कि रोची 4 टंका 3 पैसा तापर भाट जोटा कि राज्य सरकार नहीं थांती भाट रोची 15.40 टोटाल हो जाउची 55 रु जाइकी 94 पर्यंत तो एबे एइथपय कहा जाउची एक्साइज ड्यूटीटा को जदि केंद्र सरकार कमेबे ताहले टोटाल प्राइस टी कमिबो तो एई भली भाबरे तो यही भाव में जब भाट आम कहीपर कि जेहेतु डबल इंजिन सरकार अच्छी तो भाट जदि राज्य सरकार
जो भाव में ओडिशार मध्य बीजेपी सरकार अच्छी तो सही जगह जदि भाट मध्य राज्य सरकार कमेबे और केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कमेबे निश्चित भाव में यार रेट आम तेल रेट कमी पार तार इम्पैक्ट सब आड़ को पड़ो और सबू आम कहीपर सबू सेक्टर में तार इम्पैक्ट पड़ पार एकदम राजीव साहू सर आपको पचार चाहूँगी सर एक्साइज ड्यूटी कमिले जो इम्पैक्ट पड़ो या सरकार किसी एक्शन नेबे कि देखो आपण जदि बैकग्राउंड को जिबे जो एम्फासिस दिया जाउछि बजेट रे जे मध्यवित्त को किभली सुहाइब गोटे बड़ जिनस होछि पेट्रोल डीजेल गोटे जिनिस जोटा कि सबु जिनिस रे तार इम्पैक्ट पड़ी थाए गोटे कैस्केटिंग इफेक्ट मध्य पड़ी थाए जोटा आपण कहले मु आपण संगे राजी होछि जे जदि सेही एम्फासिस अनुसार आमे जिबा ताहले एवं आमर पेट्रोल डीजेल दर जेहेतु पृथ्वी रे सबुठार अधिका अच्छी एवं जो ता उपरे टैक्स रो इम्पैक्ट सर्वाधिक अच्छी किछिटा एडजस्टमेंट आमर रिसोर्सेस को अत्यधिक व्याघात न करी आमे जदि किछिटा बेनिफिट पासन करि परिबा कंज्यूमर माननको एवं जोटा कि मेनली गरीब ठू आरंभ करके मिडिल क्लास पर्यंत से अफेक्ट पड़ी थाए एटा गोटे भल अर्थनीति हम बोली मु भावुची एवं भल अर्थनीति सांगे राजनीति दिगटा भी मध्य ठीक रहबो कारण मिडिल क्लास को आपण अनेक दिन धरी निश्चित सर मु एवं एटा जदि आसीबो एटा भल हो बोली मु भावुची जेमति मिडिल क्लास कथा सर जेमति कहउतले तो सेमिति हम जदि कहबा कि अन्य सेक्टर जोटा कि साधारण जनता मान को जोटा डिपेंड करछन जोता ऊपर जेमति हम जदि कहबा कि आज समस्त पाखरे गोटे स्मार्टफोन अछि सो आउ लोक डिजिटल इंडिया आड़ को जाउचंती आमे डिजिटल पेमेंट करचंती तो सर आमे एटा कहि परिबा कि डिजिटलाइजेशन को आखनु आपे सरकारी जो स्मार्टफोन बा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रो दाम को कम करि परिबे कि जोड़ाक माने साधारण लोक माने व्यवहार करुचंती आ जोड़ा बहुल व्यवहार होची साधारण कौन सरकार को क्षेत्र में टैक्स बा कर को कम करि परिबे जो क्षेत्र में सरकार अनुभव करंती जे आमर वर्तमान टैक्स बेसटा बढ़ी जाइए माने अधिक रु अधिक लोक ये किणुचंती तेणु आम टैक्स कमे देले मध्य विशेष किसी क्षति होगा जाऊ ना तो से क्षेत्र में जो आम देखुचे मोबाइल फोन आजिकल माने व्यापक मात्रा लोक मैंने व्यवहार करुँच तो सेटा घोषणा हो किंतु कथा है साधारण कौन हो जोड़ाक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड़ाक से जीएसटी काउंसिल द्वारा निष्पत्ति हुए से गुड़ा घोषणा कराए आउ रहा जोटा केंद्र सरकार केवल प्रोडक्शन टैक्स गुड़ाक माने जो आम जो जीएसटी कथा देखुचे से दुईटा रही गोटे है यूनियन माने जीएसटी गोटे स्टेट जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी तो सेंट्रल जीएसटी मैंने प्रोडक्शन उपर टैक्सटा बसौं तो से क्षेत्र में से माने किसी कम करेंगे तार लोक मानू तार फायदा मिल पार आउ रहा साधारण से जीएसटी माध्यम जोड़ा बहुल व्यवहार द्रव्य साधारण लोक मैंने व्यवहार प्रोफेसर दास मु गोटे क्वेश्चन जानिबा को चाहिबी जे कि रिटेल क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली करबा लागि केतेक अत्यावश्यक सामग्री उपर जीएसटी ह्रास करि परंती कि सरकार हाँ सेटा मुझे कहली आप देखिए बजेट आजिकल से ऊपर विशेष आलोचना हुए नहीं कारण जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बा जीएसटी काउंसिल गोटे अच्छी तो सहीटा बारंबार से मैंने प्राय माने प्रति 3 मास 4 मास से बैठक करते से गुड़ाक निष्पत्ति हुए तेणुक आमर यूनियन बजेट साधारणतः आम अधिका माने एक्सपेक्ट करवा जो गुड़ाक माने इंपोर्ट ड्यूटी रहा तापर रहला जोड़ाक डायरेक्ट टैक्स रहला तो ता ऊपर विशेष करके रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक हुए तो फोकस करि परंती सेति पई निर्माण सामग्री जथा सीमेंट रॉड ऊपर हुए तो जीएसटी रास्ता पर संभावना रही से तो राजीव साहू को अभिषेक गोटे क्वेश्चन जानिबा को चाहिबू कहीं समस्त भितर गोटे प्रश्न रही युवपीढ़ी भितर बजेट रे कौन प्रकृत में निजुक्ति सुजोग अपॉर्चुनिटी रही से तो राजीव साहू निजुक्ति संबंधी घोषणा एथर बड़ किछि होई पारे कि कहीं आशा करा जाउछि सरकार सीआईआई रो सुपारिश आधार में एक अधिकृत जातीय निजुक्ति नीति आपणे परंती जो थे समस्त निजुक्ति प्रदानकारी मंत्रालय योजना गुड़ी को शामिल करा जाई कहा जाउछि कि गोटे प्लेटफॉर्म रे आनिबार योजना अछि सेपरि ग्रामांचल रे स्नातकंक पई गोटे इंटर्नशिप हुए तो घोषणा करा जाई पारे कि तो एथर गोटे निजुक्ति ऊपर फोकस करि परंती कि देखु गत वर्ष भली ए वर्ष मध्य निजुक्ति उपरे फोकस एंड एम्फासिस रहियो बोली आमे आशा करछु एवं तार कारण होछि आमे युवपीढ़ी को निश्चय फोकस करिबा कारण सेमाने भविष्यत एवं सेमानंक भविष्यत ठीक हेले देशर भविष्यत मध्य ठीक बाटरे जीव किंतु एठी बड़ कथा होछि हमर जो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो प्रकारे बढ़िछि
सेठी प्रकृत रे कौन करागले आमे से जिनस को एड्रेस करि परिबा जोथि गत वर्ष बजेट रे थिला अप्रेंटिस 1 कोटी अप्रेंटिस एवं आमे देखिया पड़िबो जे कौन को प्रकार इंसेंटिव एवं सेटा केते प्रोडक्टिव एरिया को जीवो एवं चाकरी क्षेत्र रे आमे जे देखिबा हमर कैपेसिटी बिल्डिंग सरकार जेंति भाबरे बढ़िबो 5 ट्रिलियन ग्रामांचल रो विकास वर्कर पे सरकार किछि करिवे की माने सही कथा आपण जेंति कहउछन युवक समाज पे स्किल्ड वर्कर दरकार होचंती एबे माने कंपनी माने स्किल्ड चाहुचंती तो स्किल डेवलपमेंट पे किछि करिवे की सरकार आपण सेमति किछि भाबुचंती कैपेसिटी बिल्डिंग एआई चैलेंज एवं अन्यान्य जो प्रतिबंधक अच्छी ताको किभली ओवरकम करी आमर युवक युवती माने तांकर जो एक्सपेक्टेशन अच्छी सेटा को किभली आगु को नहीं पारे राजीव साहू निश्चय ठीक तो राजीव साहू मध्यवित्तଙ୍କ भितरे कोन उत्साह रहिछि आमे तो निश्चित भाबे टिके जानिबा आम सहित सुमंत जोड़ी होचंती सुमंत प्रबल आशा आग्रह रहिछि एथर बजेट को नेकी आपण एक मध्यवित्त श्रेणी रो परिवार रे अछंती मिडिल क्लास कोन करे बड़ एक्सपेक्टेशन थाए प्रकृत रे सेमाने बजेट रो कोन मिलिबो बोले आशावादी अछंती जेहेतु आम नयापल्ली ब्रिट कॉलोनी अच्छु ब्रिट कॉलोनी हरमोहन पात्र जानकी मैडम संगे प्रियंका मैडम मोनालिसा सहित जोड़ी एवं आउ गोटे कुनी झोटी मत पाठ पढ़ुची आम भिजुआल देखा चाहूँ ये हूँ मध्यमित परिवार घर इनकम रही 60,000 टंका एवं पेंशन पाँच मौसा संगे पुओ इनकम करुँच तेणु मासक जो 60,000 टंका आसूसी सी विनियोग किभली होची आ बजेट कौन आशा रही टिके भिजुआल माध्यम परिवार भिजुआल आम देखुँ प्रतिक्रिया नवा जेहेतु घरे पिला पाठ पढ़ुंट इलेक्ट्रिक बिल रही पानी बिल रही राशन रही बंधुबांधव रही परिवार रही तेणु केमती चलुची प्रथम मोनालिसा जानापी चाहिए आपठू जे आप बजेट रू कौन आशा रखिंट केमती बर्तमान आप कौन करते डिटेल्स कहे एक्चुअली मु स्टूडेंट मु MCA पढ़ुची तो एज ए स्टूडेंट मोर एतिकी आशा अच्छी जी कोर्स फीसटा सेमती अधिक न बढ़ू जी भी अच्छे कारण सबू वर्ष जितेबाला भी बजेट आसे धीरे धीरे कोर्स फीस उपर भी इफेक्ट करे तो कोर्स फीस जमी न बढ़ू एटलिस्ट से जिनसा जमी कंट्रोल रहू तापर कारण एज ए स्टूडेंट बहुत किसी प्रॉब्लम हुए प्रॉब्लम रही डिमांड रही प्रॉब्लम तो कोर्स फीस बढ़ला ऑब्वियसली धीरे धीरे यदि कोर्स फीस बढ़ा मिडिल क्लास फैमिली गोटे मध्यमित परिवार को कष्ट हुए दवापाई का पैसा तापर भी जमती तेल रेट एते आकाश छुआ है जे आम जावास जमी ऑटो लाइन ऑटो हो कि रिजर्व तो पॉसिबल हो पारनी तो लाइन ऑटो हो कि बस रे हो से गुड़ाक भी बढ़ी जाऊँगी जो जगह 10 टंका लगुला से जगह भी 30 टंका 40 टंका कि 50 टंका लगुच जोटा कि आम पॉकेट मनी या फिर से जिनस भी इफेक्ट करे आउ गोटे जिनस परिवा रेट खाइबा एसबू भी एते बढ़ीगलानी से सब भी इफेक्ट करे एंड आउ गोटे अनएम्प्लॉयमेंट जॉब ओडिशा एते डेवलप करिकी एते सब जिनस होउची हेले जॉबटा सेतिकी भी हेई पारुनी एटलीस्ट सेटा मौसा जे बजेट जाए बजेट आसे प्रकृति आपनकर किछि उन्नति हुए जेमति कहा जाए सब रेट कमी जिवो किंतु ता आर वर्ष पुनी बजेट आसीबो आप किछि सुधार आशा एक्चुअली बजेट वास्तव में मध्यवित्त परिवार पे किछि नाही ये खाली छोट परिवार एवं लो इनकम ग्रुप एवं हाई इनकम ग्रुप एमाने बेनिफिटेड से माने इनकम टैक्स फ्री पाउछंती इनकम टैक्स रिपीट होउची आउ छोट परिवार से छोट श्रेणी कम इनकम जार से ओल्ड टुडे हे पारछंती सोंदा आपण पचारि पारे कि मध्यवित्त परिवार चाहूची कोन सार गुटी पचारि 60,000 टाइम रोजगार होला बेलू हमर घर भड़ा होउची 12,000 मेडिसिन गोटे कथा माउसी आपण कौन चाहती ए बजेट रे आपनकर कौन डिमांड रही बजेट रे हमर मध्यवित्त परिवार लोक मैंने असुविधा होचन कहीं जो प्रकार तेल रेट डाली रेट आपन परिवार सब 70-80 रु कौन सी परिवार रेट कम होने आम मध्यवित्त परिवार केते मौसा पाइबे 60,000 टका 60,000 आम घर भड़ा देबू मौसांगर मेडिसिन 7-8 हजार आमर जो तेल डाली आपनकर परिवा कि जो छोट पिलांगर जो एजुकेशन उपर गोटे छोट पिला मो नातुनी गोटे स्टैंडर्ड 3 रे पढ़ुची मासक 4,000-5,000 टका तार खर्च केमती मध्यवित्त परिवार आम पढ़े पर आजकल एजुकेशन निहाती दरकार प्रियंका मैडम आपको जानापी चाहिए आपन जेहेतु घर बहु हांडीशाल चलाउछंती एवं जेहेतु ये गोटे बड़ प्रश्न रहिबो कस्मेटिक कथा कहबा ड्रेस कथा कहबा लाइफस्टाइल कथा कहबा तेणु यार भीतर आपनकर कोन गोटे डिमांड रहिबो आवश्यक डिमांडटा कहतु आवश्यकता कौन कहतु कौन आशा रखते आप केन्द्र बजेट आम
जे बजेट जे सब वर्ष एते बढ़ुची जदि बजेटा कम हो जाई परिबो हमरो सब जिनसटा आम किणा सुविधा पाइपर जमती ड्रेस है आमर सब वर्ष आम ओडिया जेहेतु परंपरा अच्छी वर्ष को आम मिनिमम 4-5 ड्रेस किणा को पड़ुची छुआंकर खर्च अच्छी पढ़ापढ़ी तापर है आमर राशन खर्च है कस्मेटिक छुआंकर खेलना विभिन्न प्रकार रोची से जब पढ़ापढ़ी भी ट्यूशन देवाक पड़ुची तापर एक्स्ट्रा क्लास भी सब से बजेटा कम हो पार आम जिनसटा सब सुविधा मिल ता बाद आप जो गोटे परिवार रोचे आउ केन्द्र बजेट आप उच्चशिक्षित जेहतु चाकरी कर पाठ पढ़ुं किंतु आउ कौन आप रही डिमांड कौन आप आशा रखते डिमांड तो एटलिस्ट टिके एजुकेशन ऊपर किछिटा तो रिलीफ मिलू किछिटा तो छाड़ हो जमती कि सबू पिला अफोर्ड करि पारंतु पढ़िबा पई केते जनकर इच्छा होची पढ़िया पई भल कॉलेज रे पढ़ी पारनांती के जन पढ़ी ही पारुनांती बिल्कुल एटलिस्ट ता ऊपर किछि काम करंतु आउ गोटे रहिला कि घर नॉर्मल जिंस जमती कि गोटे सिंपल जिंस खाइबा हे जाऊ रेगुलर जिंस हे गला तेल डाली लूण तेल ए सब जिंस सेति ऊपर टिके छाड़ले ना सबुथि पई इंप्रूव हे परियो सबुथि पई बेटर हो पार से जिनसटा ऑयल रेट हो डाली जमती कि परिवार डेली एसेंशियल जिनस जोटा कहे हरमन बाबू जाना चाहिए आपन तो निजर समस्या कथा कहते आवश्यकता कौन रही बजेट आवश्यकता हो कौन प्रकार सरकार ये रेट दरदाम टा कमे पारे जदि ताहले लोक सब ग्रुप लोक उपकृत हो पारे गोटे तेलटा है आपंकर 170 टंका गोटे लिटर आम के शुणी नथिले परिवा तो 80-70 कमुनी किसी तो खाइबा कौन बचुए कि लोक तो खाइबा दरकार प्रथम कथा तेणु घर चलवाई गोटे बड़ दुरूह व्यापार हो जाऊँ तेणु यही बाबद आम केमती सरकार जो आशा करूँ कौन प्रकार दरदाम जब कर दिंते कमे दिंते ताहले आम टे शांति खाई पी बंची पारते बड़ कथा हूँ कि गोटे मध्यमित परिवार कथा आप शुणुले जे बजेट जाए बजेट आसे किंतु ए जो दरदाम ए जो अच्छे दिन निश्चित भाव में सुमंत प्रति थर जिते बजेट आसे मिडिल क्लास फैमिली मध्यवित्त श्रेणी लोकंकर गोटे उत्कंठा पड़ी जाए और एक्सपेक्टेशन अधिक थाए किंतु वर्तमान जो दर वृद्धि ये लोकों को बहुत टेंशन देलानी समस्त आशावादी अच्छी एटलिस्ट दर कमु जहाद्वारा से उपकृत होते साधारण नित्य व्यवहार्य सामग्री दर कमु और सरकार ए दिगरे कौन पदक्षेप नौकर नजर रोचे सुमंत किस समय पर आपण पाखु फेरुचु किंतु आम बर्तमान गोटे छोट ब्रेक नहीं जाऊँ और ब्रेक पर देखा कमिंग अप प्रायोजक जायका ऑर्गेनिक्स मल्टीग्रेन सत्तू हम समझते हैं आपकी हर एक पल की कीमत। आज आसिबो केंद्रीय बजेट संसद रे देशर आय व्ययर हिसाब देबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फोकस रे महिला और मध्यवित्त रहिबा नै संकेत देई सारिछंती मोदी कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पई व्यय बराद बढ़ी पारे अर्थ मंत्रालय बजेट कॉपी नेले निर्मला। कमिंग अप प्रायोजक जायका ऑर्गेनिक्स मल्टीग्रेन सत्तू हम समझते हैं आपकी हर एक पल की कीमत। राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिंट सृष्टि होइछि विवाद। सोनिया कहते राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पोर थिंग थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग बोली अभिहित करथिले राहुल गांधी। उभयंकर मंतव्य को प्रधानमंत्री निंदा करने सहित कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बोली आरोप लगाई। वर्तमान सुधा 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइले राशन कार्ड एक कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते कंट्राक्चुअल चाकरिया अर्थात 11 ରୁ 12,000 दरमा पाउथिबा सरकारी चाकरिया राशन कार्ड कटिब नाही। स्वल्प वेतनभोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबार आवश्यकता नाही। एनएफएस नियम अनुसार ग्रामांचल में जार मासिक रोजगार 10,000 टंका थिबो सेमाने राशन कार्ड फेराइबे नाही। सुभद्रा योजना हिताधिकारी आगामी दिन में मुद्रा योजना भी लाभ नहीं पारे। मुद्रा योजना किशोरी युवती 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे ऋण मिलुछि। मुद्रा योजना ग्यारंटीर आवश्यकता पड़ुवा बेले सुभद्रा अर्थ ग्यारंटी भाव में काम कहुछि। महिला व्यवसाय बाबद जणाइबाकू सुण सुभद्रा कुह सुभद्रा और सुभद्रा सेतु आरंभ करिछि महिला और शिशु विकास विभाग।
पुणी ब्रिक्स देश समूह को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धमक डॉलर विकल्प चिंता कले किंबा विकल्प अपनाइले 100% कर लागू प्रस्तुत रहा चेताई देइछन्ती ट्रम्प। ब्रिक्स देश समूह उपर नजर रखा जाइछि जदि सेमाने डॉलर विकल्प सृष्टि करती किंबा अन्य कोनोसी मुद्रा को समर्थन दियंती तेबे ब्रिक्स देश समूहर उत्पाद उपर 100% कर लागू हेबा निश्चित। ब्रिक्स बाद अन्य जो देश ब्रिक्स द्वारा सृष्टि किंबा समर्थित मुद्रा को समर्थन करिबो से देश उपर मध्य 100% कर लागू कराजिबो। नोबेल शांति पुरस्कार पर एलन मस्क नाम अनुमोदित। यूरोपर पार्लियामेंटर सदस्य ब्रांको ग्रिम्स मस्क नाम अनुमोदन करिसेंती। ए संक्रांत आवेदन सफल होइतिबा बेले नॉर्वेर नोबेल कमिटी याकू ग्रहण करिछि। बाघ स्वाधीनता पर मस्कर अवदान यथेष्ट रही तेणु तांकु नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करा जाऊ बोली आवेदन उल्लेख करिसेंती यूरोपीय पार्लियामेंटर सदस्य ब्रांको ग्रिम्स। बारवाटी देखा मिला नियार अंदाज। बारवाटी अनुधान समय क्रिकेट खेली मुख्यमंत्री मोहन माझी। मुख्यमंत्री बैटिंग करथिले आउ पाखरे क्रीड़ा मंत्री और अन्य पदाधिकारी माने ताली मारी उत्साहित करथिले। क्रीड़ा मंत्री सूरज सूर्यवंशी और ओसीए संपादक संजय बेहरा किछि समय खेलिथिबार देखा मिलिथिला। फेब्रुआरी 9 तारिख में बारवाटी खेल भारत इंग्लैंड दिनिकिया मैच। मैच पूर्व प्रस्तुतिर समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। अनुध्यान पर प्रस्तुति संतोषजनक थिबा कहिसेंती मुख्यमंत्री। कहिसेंती नुआ सरकार पई यह प्रथम चैलेंज। समस्त प्रकार आयोजन ठीक भाव में चली। यह अवसर में मैच रो थीम सॉन्ग को लोकार्पित करिसेंती मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर ट्रैफिक भीड़ ह्रास पाई प्राय 70,000 कोटी। द्वंद्व अछंती चिंता करंतुनी आपणक उपरे लदी देबिनी खबर रो बोझ देखाइबी जहां आपण देखिबाकू चाहंती। सरल रे कहिबी खबर पछर कहानी। खबर कौन ताहा बड़ कथा नुहे। बड़ कथा हेउची किए कला केमिति हेला काहेकि हेला। आपणक कहिबी खबर पछर असल कथा। राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिंट सृष्टि होइछि विवाद। सोनिया कहते राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पोर थिंग थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग बोली अभिहित करथिले राहुल गांधी। उभयंकर मंतव्य को प्रधानमंत्री निंदा करने सहित कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बोली आरोप लगाई। वर्तमान सुधा 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइले राशन कार्ड एक कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते कंट्राक्चुअल चाकरिया अर्थात 11 ରୁ 12,000 दरमा पाउथिबा सरकारी चाकरियांकर राशन कार्ड कटिबो नाही। स्वल्प वेतनभोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबार आवश्यकता नाही। एनएफएस नियम अनुसार ग्रामांचल में जार मासिक रोजगार 10,000 टंका थिबो सेमाने राशन कार्ड फेराइबे नाही। सुभद्रा योजना हिताधिकारी आगामी दिन में मुद्रा योजना भी लाभ नहीं पारे। मुद्रा योजना किशोरी युवती 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे ऋण मिलुछि। मुद्रा योजना ग्यारंटीर आवश्यकता पड़ुवा बेले सुभद्रा अर्थ ग्यारंटी भाव में काम करिबो बोली कहा जाउछि। महिला को व्यवसाय बाबद रे तो बजेट को लेकिन समस्त भीतर एक प्रकार उत्साह रही। आउ किसी समय पर आगत हो बजेट साधारण लोक आरंभ करके कॉर्पोरेट जगत पर्यंत एने उच्चतार सहित समस्त अपेक्षा कर 2025-26 आर्थिक वर्ष बजेट आसो। बजेट रूपरेख कौन रहा कौ दिग पर फोकस कर धनी मध्यवित्त गरीब समस्त नजर रही बजेट उपरे। अन्यपटे बजेट उपस्थापन थी स्टॉक मार्केट आज खोला रहा को स्वतंत्र किसी मिल पारे बोली ओडिशावासी आशा व्यक्त कर बैठक में बजेट को अनुमोदन मिल विशेष करके ग्रामांचल विकास अधिक नियुक्ति किभली होई परिबो ताहापर फोकस रही पारे। ऋण भार किभली नियंत्रण हेबो ताहापर मध्य फोकस रहिबो। बजेट रे संस्कार कोन कोन आसीबो ताहापर मध्य नजर रहिबो। सेहिपरि कृषि क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जिबा आवश्यक बोली ओडिशावासी मध्य आशावादी अछंती। मोदी सरकार को तृतीय पाळी रही होची प्रथम बजेट आउ मात्र किछि समय अपेक्षा रहिला। किछि समय परे बड़ घोषणा हेबाकू जाउची। किछि समय पर आसीबो पूर्णांग बजेट। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 आर्थिक
आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिवे। बजेट रे काहाकू कोन मिलिबो, मध्यवित्तक ऊपर टिकस बोझ कमिबो ना निम्न आय वर्गक पई कोन किसी विशेष रहिबो, जहाकू नेकी समस्तक भितर एक प्रकार उत्साह रही, उत्कंठा रही। बड़ कथा होची कि किस पूर्व जमती आम आलोचना करूँ बजेट होची बेस गुरुत्वपूर्ण। कहीं कौ दृष्टि गुरुत्वपूर्ण कहीं विशेष करके आप देखु जो निर्मला सीतारमण आम जब किसी चिरस्मरणीय बजेट पर नजर पकाई नेबा 1947 स्वाधीन भारतर प्रथम साधारण बजेट तत्कालीन अर्थमंत्री आर.के. षणमुगन उपस्थापन करथिले। 1968 रे बजेट को मोरारजी देसाई आगत करथिले। यहाको लोकंको बजेट बोली कहगला। 1991 रे नरसिंह राव सरकार अमଳରେ मनमोहन सिंह अर्थमंत्री आगत करथिले बजेट। 1997 रे पी चिदंबरम बजेट उपस्थापन करथिले। 2000 रे याको कहगला सहस्राधिक बजेट। एवं यार भीतर आप देखिपारुछंती वर्तमान समय संसद भवन अभिमुखे आसुछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। किसी समय पूर्व राष्ट्रपति भवन को जाइथिले, राष्ट्रपति को कॉपी प्रदान करिसंती। वर्तमान संसद भवन अभिमुखे आसुछंती निर्मला सीतारमण। आपण पूरा चित्र देखिपारुछंती कहीं मोदी 3.0 बजेट रु ओडिशावासी कहतु सारा भारत वर्षर समस्त एक्सपेक्टेशन अधिक। एवं सबुठ बड़ कथा होची क्रमागत अष्टम थर बजेट उपस्थापन करने को जाउछंती वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। पूर्वतर अर्थमंत्री अरुण जेटली क्रमागत भाव में 5 थर बजेट आगत करथिले। पूर्वर केवल अर्थमंत्री भाव में मनमोहन सिंह, जसवंत सिन्हा, पी चिदंबरम, मोरारजी देसाई क्रमागत भाव में बजेट उपस्थापन करिसंती। एवं सर्वाधिक साधारण बजेट उपस्थापन रेकर्ड देसाई नारे रही। 9 नियमित बजेट, 2 अंतरीण बजेट उपस्थापन करिसंती चिदंबरम। 9टी बजेट उपस्थापन करिसंती, 8टी होची नियमित बजेट। 2004 रु 8 मध्य चिदंबरम उपा सरकार शासन काल रे क्रमागत भाव में 5टी बजेट आगत करिसंती। एवं बड़ कथा होची कि एथर बजेट समस्त अपेक्षा रही साधारण जनता बजेट रु कौन आसूची कहीं विशेष करके एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र रु समस्त नजर होची। 5 वर्ष हाराहारी 5% अभिवृद्धि करिछि कृषि क्षेत्र। अर्थनैतिक सर्वेक्षण अनुसार कृषि और आनुषंगिक कार्यकलाप भारतीय अर्थनीतिर मेरुदंड बैकबोन एवं ए क्षेत्र में हुए तो किसी गोटे बड़ घोषणा करा जाई पारे। एवं निर्मला बजेट पेड़ी एक कौ क्षेत्र को गुरुत्व दिज्व कौन रह्यो क्षेत्र को प्राधान्य जहां नहीं कल्पना जल्पना लगी रही। विशेष करके कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, रियल इस्टेट उपर फोकस दि जापे। रियल इस्टेट क्षेत्र को गुरुत्व दिज्व सहित निर्माण सामग्री उपर जीएसटी ह्रास हो पारे। सेहीपरि महिलांक उपर संकेत दि जापे। मिशन शक्ति, जननी सुरक्षा योजना, मातृवंदना योजना भली महिला केन्द्रिक स्कीम गुड़ी को सरकार देखा कि से दिगरे अधिक व्यवहार करपारती। गरीबों गुरुत्व देवा सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व्यवहार करपारती। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को फोकस कर जीडीपी प्राय 5% व्यय लगी बजेट लक्ष्य रही पारे। सेहीपरि एआई भित्तिक चिकित्सा प्रणाली उपर सरकार एथर फोकस करपारती। बजेट रे कृषि क्षेत्र लगी अधिक गुरुत्व दि जापे। एमएसपी प्रक्रिया को अधिक क्रियाशील करने लगी सरकार हुए तो दरगत स्थिरता संक्रांत कौशल आपणई पारती। सेहीपरि किसान क्रेडिट स्कीम को अधिक संप्रसारित करपारती सरकार। रिटेल क्षेत्र को अधिक शक्तिशाली करने जीएसटी ह्रास करपारती निर्मला। इलेक्ट्रिक जान सकाशे जीएसटी भी ह्रास कर संभावना अच्छी जहाँ पर समस्त नजर रही। तो बर्तमान मो सहयोगी विभू बर्तमान जोड़ी हेले ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବର୍ଷ 2025 ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଯାହା ଚିରାଚରିତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖି ଆସେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ବାଜିଥାଏ। ତେଣୁ ए समय उपरे समस्तंकर नजर रही है। धीरे धीरे वर्तमान प्रक्रिया आरंभ होबार लगी। आउ किछि समय अपेक्षा जितेबाला देश पई उपस्थापित हेबो बजेट एवं ए बजेट को नहीं सारा देशवासी अपेक्षा रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू आम सहित रोचंती। श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची। आम देखुचे वर्तमान प्रक्रिया आरंभ हो सारी देशवासी जो आशा अपेक्षा रही वास्तव में ए बजेट केते पूरण करिछि ताकु नहीं अनेक समय धरी चर्चा से समय आज उपनीत बजेट सबकिछि स्पष्ट करिवो। देखु 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे आसी सारी एवं से प्रायोरिटी फोकस अचीवमेंट सबु जिनस स्पष्ट दिशुची। गोटे बड़ कथा होची जो परिस्थिति रे भारत ग्रोथ अचीव करिछि, जो प्रकार ग्रोथ अचीव करिछि सेटा निश्चय अप्रिशिएट करिवार अछि। कारण
ଯେତେବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀର ट्रेड एंड कमर्स संकुचित होची सेतेबेले भारत जो जो अचीवमेंट करिछि आपण जे देखिबे सेगुडिक निश्चय आमे तांको एप्रिशिएट करिबा। द्वितीय कथा होची आमर जो कंसर्न रोची वर्तमान आमर कंसर्न अनेक किंतु आमर मेजर कंसर्न रहिला गरीबंकर मानदंड इंप्रूव करिबा एवं मध्यवित्तक पाखरे अधिका पैसा दबा। गोटे सूचना जोटा आसुची जे मध्यवित्तक आय ओवर द इयर संकुचित होची जो प्रकार अर्थनीति वृद्धि घटुची जो प्रकार कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ुची कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ुची से अनुसार एम्प्लॉय मानकर बेनिफिट इंप्रूव करिनाई बोली जहाँ सूचना आसुची एवं ता संगे संगे आमर देखिया कथा जे टैक्स गोटे ओवर बर्डन न हो कारण आमे 2017 रु जो जीएसटी आरंभ होइतला आमे सेतिरे निश्चय सफलता पाइचे एवं आमर जीएसटी कलेक्शन मध्य सिग्निफिकेंटली बढ़ुची एवं सही समय आमर देखिया कथा जे नित्य व्यवहार्य जिनिस उपरे जो टिकस लागुची सेतिरे किछि एडजस्टमेंट दरकार कि नहीं एवं पेट्रोलियम प्रोडक्ट जोटा कि सबु जिनिस रे तार किछि ना किछि अंश थाए एवं जेहेतु पेट्रोलियम प्रोडक्ट उपरे टैक्स अधिका अछि इंटरनेशनल प्राइस तुलन रे टैक्स अधिका लागुची सेथिरे किछि एडजस्टमेंट करिवो बोली आपण जो कथा कहले दुईटी दिग उपरे सरकार यथेष्ट गुरुत्व देई पारंती नित्य व्यवहार्य सामग्री जहां जनसाधारणकर आवश्यकता रही थाए जदि सेथिरे सेमाने किछि रिहाती पांती ताहेले निश्चय आश्वस्त लाभ करिवे एहा बाद पेट्रोलियम जात पदार्थ पेट्रोल डीजेल गैस ए सबुरे जदि किछि रिहाती मिले ताहेले एहार गुटिए बड़ प्रभाव जनसाधारणक उपरे पड़िबो देशवासीक उपरे पड़िबो एवं बजार उपरे मध्य परिवर्तन ए दुईटी दिग उपरे मध्य विशेषज्ञ आमे देखुचे यथेष्ट गुरुत्व दे आसुचंती एवं वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव साहू मध्य से संक्रांत रे मत रखुचंती। श्रीयुक्त राजीव साहू एक कथा मध्य कहंतु कि आमे जानिचे भारत वर्ष एक ग्राम केंद्रिक देश एवं ग्रामीण अर्थनीति जे पर्यंत सुदृढ़ न होईची आगकू न बढ़ीची देशर अभिवृद्धि असंभव से दृष्टिकोणरू सरकार ग्रामीण अर्थनीति रे सुधार आनिबा पई व्यवस्था को आहुरी बढ़ाइबा पई कोन पदक्षेप नै पारंती आवश्यकता कोन कहूची वर्तमान रो समय देखो आमे जदि देखिबा ग्रामांचलर अवस्था एते भल नाही तार कारण होची गोटे सर्वे आसीथिला जोथरे देखौची जे ग्रामांचलर परचेजिंग पावर एवं ग्रामांचल रे परिवार मानकर खर्च एते कम जोटा कि तांकर मानदंड को ठीक भाव में रिफ्लेक्ट करू नाही एवं सेतिरे इम्प्रूवमेंट दरकार नंबर 1 नंबर 2 भारत गोटे ग्रामांचल बहुल देश होइथिबारु आमर फोकस ग्रामांचल उपरे मध्य अधिक रहिबा दरकार। तृतीय होची ग्रामांचलर मानदंड उन्नति संगे संगे ग्रामांचल जो युवक युवती अछंती सेमाने अधिका अर्बन सेक्टर को माइग्रेट न करी सेमाने किपली ग्रामांचल तांकर जीविका उत्पादन करि परिबे जीविका निर्वाह करि परिबे सेटा मध्य गोटे बड़ फोकस तेणु सेथिपई ग्रामांचल रे इनोवेटिव योजना संगरे अधिका आलोकेशन जाई एवं जोटा कि मु कहबी जे ओडिशा सरकार जो प्रकार ए जिनिस को ठीक भाव में इम्पैक्टफुली ताकू एग्जीक्यूट करिसेंती जोटा कि होची एमएसपी उपरे अधिक 800 टंका जो देइछंती तार इम्पैक्ट गाँ गहल रे गोटे पॉजिटिव जिनिस हिसाब रे आसुची तेणु ग्रामांचल रे जो प्रकार साहाय्य दरकार आलोकेशन दरकार सेटा को फोकस रे रखिबा केवल केंद्र सरकार नहंती राज्य सरकार मध्य ताकू फोकस रे रखिबा दरकार बिल्कुल एवं हम देखि आसुचे मु तो कहबी मु टोटली एकमत आपन संगे रे जे ग्रामांचल रो विकास ग्रामांचल रे लोक मानक पाखरे अधिक आय एवं ग्रामांचल रे तांकर स्वच्छलता वृद्धि पाइबा गोटे निश्चय प्रायोरिटी रहिबो जोटा कि सरकार चेष्टा करिसंती किंतु मु भाबुची आहुरी ताकू अधिका फोकस रखिबा दरकार पड़ुची। आज्ञा आपण जेमति कहिले कि कथा मध्ये हम लगातार भाव में देखि आसुचे उभय सरकार चेष्टा करूचंती कि भली गाँ रे रहुथिबा लोकंक पाखरे टंका पहुंचीबो तांकर क्रय क्षमता बढ़िबो एवं ग्रामीण अर्थनीति केमिति सुदृढ़ हेबो एवं आशा करा जाए ए बजेट रे मध्ये तार एक बड़ प्रतिफलन देखिबा पई मिलिबो एवं आमे जो विकसित भारत रो कथा कहूचे ए बजेट से धारा को निश्चय भारत वर्ष को आहुरी आगो को बढ़ाइबो ए आशा विश्वास तो आम निश्चय करुचे। प्रोफेसर अमरेंद्र दास आम सहित रोचंती अर्थनीति विशारद श्रीयुक्त दास आपणकर मतामत कौन मोटामोटी भाव में बजेट को नहीं आशा आम कौन सबू करवा एवं तार प्रतिफलन किभली होई पारे। और एमएसएमई का बात हम लोग हमेशा करते
क्षमा करेंगे बोधे श्रीजुक्त अमरेन्द्र दास सहित जोगाजोग हो पारुनी आम लगातार भाव में बजेट संक्रांतीय खबर उपर नजर रखीचु और आम सहित वरिष्ठ चार्टार्ड अकाउंटेंट अच्छा विभिन्न अर्थनीति विशारद जोड़ुंट बजेट्र विभिन्न दिग को नहीं आम मैंने विश्लेषण करुचु लोकंर आशा अपेक्षा कौन बजेट किभली हेबा दरकार बजेट एक लोकाभिमुखी बजेट हेबो कि मोदी सरकार तृतीय पाली रे प्रथम बजेट रे कौन सब उपहार दे पारंती बा सेभली किछि गुटे बड़ घोषणा आसी पारे कि जाहाकु नै तमाम चर्चा यार भितरे आ किछि समय भितरे बसिबो केंद्र कैबिनेट बैठक जहा एक साधारण प्रक्रिया कारण बजेट उपस्थापित हेबा पूर्व केंद्र कैबिनेट रो मोहर आवश्यकता रही थाए अर्थात पारित हेबार आवश्यकता रही थाए तेणु ए बैठक मध्य बजेट दृष्टिकोण यथेष्ट गुरुत्व रखे अर्थात बजेट उपस्थापन हेबा पूर्व ए होउछि प्रारंभिक प्रक्रिया वर्तमान आम किसी समय तले देखुले कि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन में पहुंची राष्ट्रपति को साक्षात करथिले एवं अनुमोदन प्राप्त होइथिला एवं सारा देशवासी आशा अपेक्षा उपरे किभली ए बजेट छिड़ा हेबो ता उपरे रहिछि समस्तंकर नजर एवं लगातार भाव में जेतेबेले 10 वर्ष सरकार गठन कर सारी 10 वर्षर सरकार सरीछि एवं 11 वर्ष पुनर्बार तृतीय थर पई दायित्व को आसिबा परे मोदी सरकार ए होउछि प्रथम बजेट तेणु ए प्रथम बजेट निश्चय अनेक गुरुत्व रखिबो एवं ए प्रथम बजेट ही अनेक किछि संकेत देव कि आगामी 5 वर्ष बा आगामी 4 वर्ष रे सरकार बजेट रूपरेख किभली होई पारे सरकार योजना कौन होई पारे तेणु ए प्रथम बजेट यथेष्ट गुरुत्व रखुछि विभिन्न दृष्टिकोण सम्यक सूचना मिल जिवो कि 5 वर्ष पई सरकार विजन कौन अछि योजना कौन अछि एवं सरकार ए बजेट रे तार प्रविधान आमे जेतेबेले देखिबा बा प्रावधान देखिबा से समय अनुमान सबु किछि करि हेबो तेणु समस्त दृष्टिकोण ए बजेट यथेष्ट गुरुत्व एवं देशवासी मध्य अपेक्षा रे रहिचंती एवं अनेक चर्चा जेमिति आमे समस्ते जानिचे कि आयकर स्लैब को नहीं अनेक चर्चा कौन प्रकार रिहाती मिल पारे कि से संक्रांत में अनेक चर्चा ए तमाम दृष्टिकोण आम देखिले सारा देशवासी यथेष्ट मात्रा उत्साहित अच्छा जनसाधारण नुहति अर्थनीति विशारद हूँ विशेषज्ञ हूँ समस्त अपेक्षा रही ए बजेट उपस्थापन को किसी समय पर बजेट उपस्थापन हेब ता पूर्व ए होची चित्र अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संपूर्ण भाव में प्रस्तुत एवं बजेट पेड़ी खोलिबे तेणु बजेट पेड़ी कौन सब बाहर किसी सरप्राइज आसूची कि सरकार किसी नुआ योजना घोषणा करुचंती कि पुराना योजन अर्थराशि केते बढ़ुची ग्रामीण अर्थनीति रे सुधार आनिबा पई व्यवस्था कौन करा जाउची रोजगार क्षम कराइबा पई बा रोजगार नियुक्ति बढ़ाइबा पई सरकारଙ୍କର पदक्षेप सबू कौन हो पारे ता उपरे मध्य देशवासी नजर रही बाद दरदाम वृद्धि मुद्रास्फीति ए सबू मध्य देश में एक चिंताजनक स्थिति आनी कारण लोकंकर रोजगार तुलन में खर्च बढ़ुची तेणु लोकों ए गोटे निश्चय चिंता भरा समय बा आह्वान भरा समय और एक कथा को सरकार हृदबोध कर आशा करा जाई पारे मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त और गरीब ए तमाम दिग उपरे सरकार गुरुत्व दे पारंती अर्थात कौन क्षेत्र को मध्य नाखुश करि न पारंती प्रतिटी क्षेत्र प्रतिटी दिग उपरे गुरुत्व दिया जाए एवं ए बजेट केवल आज गोटे दिन नुहे आम समस्ते जानिचे बजेट प्रक्रिया जितेबाला बजेट उपस्थापन हुए तार ढेर पूर्व अनेक विशेषज्ञों को नहीं एक कमिटी गठन हुए देशर आवश्यकता देशर स्थिति एवं सरकार ए दिगरे कौन सब पदक्षेप नेबार आवश्यकता ए तमाम परामर्श पाइबा परे सरकार एक रूपरेख गठन करती अर्थात बजेट आणती तेणु आम आशा करवा सरकार जितेबाला लंबा समय धरी स्थिर सरकार देश में चली देशर स्थिति देशर अर्थनीति लोकंर आवश्यकता को ठीक भाव में बुझी पारिचंती एवं सरकार एवं ए बजेट रे तार प्रतिफलन देखिबा पई मिली पारे ए आशा एवं विश्वास आमे समस्ते करूचे। तेबे टिकस को नहीं अनेक चर्चा तेणु टिकस रे थिला कौन आशा कौन करा जाउची मो सहयोगी स्वागतिका रहउचंती आपनको विस्तृत भाव में बुझेइबे स्वागतिका। रही मो भीतर रही सारा देशवासी भीतर रही प्रकृत जदि आयकर रिहाती घोषणा नहीं नुआ आयकर रिहाती कौन प्रकृत में घोषणा कर जहाँ पर समस्त नजर रही तो यार भीतर स्वास्थ्य बीमा को सामिल कर नुआ आयकर एनपीएस रिहाती परिमाण हुए तो वृद्धि कर केवल से नुहे कैपिटल गेन टैक्स रे रिहाती दि जाए सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स प्रत्याहार कर डायरेक्ट टैक्स कोड प्रणयन घोषणा कर ये बड़ घोषणा जहाँ द्वारा कहीपर लोक मैंने उपकृत हे सेपरी जो ओल्ड टैक्स रिजम थिला तो से नहीं गोटे किसी बड़ घोषणा कर न्यू टैक्स रिजिम रे स्लैब संप्रसारण कर न्यू टैक्स रिजिम रे आपण जानती टैक्स रेट को परिवर्तन कर बोली हुए तो सरकार चिंता करि पारंती केवल सेतिकी नुहे कैपिटल गेन कथा कोंतु कैपिटल गेन टैक्स रे मध्य परिवर्तन नहीं सरकार गोटे बड़ पदक्षेप नहीं पारंती सेपरी कॉर्पोरेट टैक्स जब समस्त को नजर थाए कि कॉर्पोरेट टैक्स रे कौन प्रकृत रे रहिबो
से क्षेत्र में हुए तो सरकार बड़ परिवर्तन आनी पारती कहीं केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करेंगे। आउ मात्र किछि समय अपेक्षा रहिला एवं किछि समय अपेक्षा पर सबू देखिबा कि सामना को आसीबो। बड़ कथा होछि कि जेमति आपण कहिले कि एथर प्रकृति रे कोन रहिबो कहीं एथर बजेट रूपरेख कोन रहि पारे एवं को क्षेत्र नै बड़ घोषणा करि पारे समस्त को भितर एक प्रकार उत्सुकता रही। बजेट रे सरकार मुद्रास्फीति और टिकस क्षेत्र में हुए तो लोकों बड़ घोषणा करि पारंती। सबुठारु बड़ गिफ्ट स्वरूप बा उपहार स्वरूप टिकस रिहाती आकार में मिलिबार संभावना रही बोली अनेक चर्चा हेउछि। विभिन्न क्षेत्र पर बजेट रे कोन कोन रही ताहा अर्थमंत्री बजेट पेड़ी जेतेबेले विभू खोलिबो एकदम स्पष्ट होइजिबो। विभू बिल्कुल अनेक आशा आकांक्षा एवं संभावना तारी भितरे उपस्थापित हेबा पई जाउची बजेट 2025-26 आर्थिक वर्ष पई सरकार केउ क्षेत्र उपरे जोर देउचंती केउ वर्गों को यथेष्ट गुरुत्व देउचंती ताकु नै तो अनेक चर्चा यारी भितर आमे विभिन्न दिग विभिन्न वर्ग को नै मध्य विश्लेषण करूछु सेमानकर आशा अपेक्षा कोन रहिछि से संक्रांत रे मध्य जानिबा पई चेष्टा करूछु। तेणु खास करी कि वर्तमान देश रे महिला शक्ति बा महिला सशक्तकरण नै अनेक चर्चा एवं महिलांक पई अनेक योजना अनेक परिकल्पना करा जाउची किभली भाबरे महिला आगो को बढ़िबे आर्थिक दृष्टिकोण स्वावलंबी हेबे। तेणु आशा करा जाउची चलित बजेट रे महिलांक पई किछि स्वतंत्र योजना बा किछि स्वतंत्र व्यवहार मध्य करि पारंती केंद्र सरकार। ठीक एही समय रे आमे जानिबा महिलांकर आशा अपेक्षा कोन रहउची मो सहयोगी दिवेंदु मिश्र जोड़ुछंती आम सहित कटक रु तांको सहित किछि महिला अछंती महिलांकर आशा कोन रहिछि बजेट को नै सेमानकर दृष्टिभंगी कोन आमे विस्तृत भाव रे जानिबा पई चेष्टा करिबा। दिवेंदु पूरा सूचना दियंतु महिला कोन चाहुचंती कोन कहउचंती। देखते बाबू यदि आम कह आज जो बजेट उपस्थापन हेब अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जो बजेट उपस्थापन करेंगे कौन पीढ़ी रही से सबू वर्गर सबू क्षेत्र लोकों भितर बेस उत्कंठा रही आशा रही। आम जब देखा विशेषकर महिला माने बेस आशावादी अच्छा कारण महिला मान किसी स्वतंत्र व्यवस्था बजेट में हम कि से संपर्क में जानापी आम सहित जोड़ी होती किसी महिला जो मान सहित आम सीधा सड़क जोड़ी होचु आम से जो महिला मैंने आम सहित जोड़ी होती से गृहिणी अच्छा उद्योगी अच्छा एवं करदाता अच्छा तेणु से सहित आलोचना करवा से कौन आशा रखिंट चलित बजेट रु जेहेतु अनेक महिला आम सहित जोड़ी होगी रही से प्रथम आलोचना करवा। आपड़ देखुं जो मैंने भी अच्छा से अनेक आशा रखिंट गृहिणी अच्छा समस्त मध्यवित्त परिवार आम सहित जोड़ी होती। प्रथम मैडम आप सहित आलोचना करने चाहिए जड़े गृहिणी हिसाब से आपड़ ये बजेट रु कौन आशा रखिंट। मोर तो बहुत आशा अच्छी प्रतिथर परी आम एथरक जमी निराश न हो से आम बजेट को चातक परी अनै रही कौन हवा दरकार ये बजेट। हाँ ये बजेट रे आमर जो नित्य सामग्री सब जेहेतु आम गृहिणी आम उपर घर सब निर्भर करे स्वामी सीना इनकम करती किंतु आम पूरा घर टी चलाऊ से आम चाहूँ घर सब प्रत्येक जिनस जमती जीएसटी हरिका लगुच आम कि गोटे माने बजेट जदि एमती ठीक हम आम कि बंचई पारू भविष्य आम पाई आम स्वास्थ्य आम कि बंचई पारू से बहुत आशा। आपनकर कौन आशा अछि मैडम। आमर आशा आम कमी आम महिला माने ना आम कमी स्वावलंबी हबू आम पिला आम घर रोजगार आम स्वामी मान साहाय्य करूँ आम से आशा कर बजेट रे आम सुविधा करा जाऊ। कौन कौन सुविधा हवा दरकार आजिकल तो गोटे छोट माने तेल लिटर किनले भी तादर जीएसटी लगुच से जीएसटी टा केमती बंद करा दियो आम रिक्वेस्ट करूँ। हाँ रंधन गैस 800 टंका किणा 850 टंका किणला बेलू आम कष्ट हो जाऊँ 400-500 टंका भितर हेले आम टे उपलब्ध हूँ। अनेक आशा रखिंट आम सहित उद्योगी अच्छा जो मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योर अच्छा प्रतिक्रिया नवा। मैडम आप जड़े उद्योगी एंटरप्रेन्योर महिला उद्योगी आपड़ ये बजेट रु कौन आशा रखिंट कौन हवा दरकार महिला मान जड़े उद्योगी हिसाब गोटे उद्योगी हिसाब से जो आमको जो दिया बजेट टा दिया 1 लाख की 5 लाख पाखापाखि दिया जो बजेट आमर ब्यूटी पार्लर लगी कि तथापि आम हाथ रू खर्च हो जोटा कि आमको बहुत माने शुद्धटा पड़ जाऊँगी तो से शुद्धटा कम कले बेटर हुआ आउ रहिला प्रत्येक ब्लॉक रे गोटे माने खोलिले बहुत भल हुआ किसी गोटे इंस्टीट्यूट खोलिले भल हुआ। उद्योग संख्या महिला जो मैंने अच्छा करदाता अच्छा आम से जो मैंने टैक्स पे कर प्रतिक्रिया ना मैडम आप चाकरी और करदाता केमती आशा रखिंट बजेट रे जो टैक्स रही केमती हवा दरकार। देखो गोटे चाकरी वार्षिक 5 लाख लागू हो इनकम टैक्स टा
जदि 5 लाख 6 लाख भितर जड़े रोजगार करुच्ची सी तार इनकम टैक्स देले तार जो एजुकेशन पिला मानकर एजुकेशन स्वास्थ्य क्षेत्र रे हेल्थ सेक्टर रे सी तार इन्वेस्ट करि पारुनी माने सही परिमाण रे सेविंग भी हो पारुनी। तेणु मोर माने अनुरोध कि ए जो बजेट आसुची ए बजेट रे जो 5 लाख हमर लिमिट करा हेची ताहा 8 लाख रे 10 लाख भितर छाड़ करा गले आमे उपकृत होतु। मैडम आपण कोन आशा रखिछन? नमस्कार मोर कहवा कथा आमे गृहिणी आम मान सब सुविधा है बेले नित्य व्यवहार्य जिनस जमी परिवार रेट आलू पिज गोटे सामान्य आलू पिज नियंतु ता रेट भी बहुत बढ़ी जाऊँगी। साधारण गरीब लोकटे आलुटे भातटे खाई निज पेट पोषि पार किंतु बर्तमान सेहीटा भी हो पारुनी। तो आम चेष्टा करुचु आम भावुचु जदि सरकार आम प्रति सेटा देखते परिवार रेट केमती कमिबो गैस रेट केमती कमिबो आउ समस्ते दी टाइम खाइबा को भल पाइबे सेटा आग खाइबाटा दरकार। तेणु करके सेटा हेले आम बहुत उपकृत हबु सबु समस्त कल्याण हिसाब से जिनसटा हो समस्त जमी सुविधा हेतु समस्त महिला मानकर आप प्रतिक्रिया शुणुले विभु जो समस्त आशा रही बजेट रे किछि ना किछि महिला मानक पई विशेष करके जमी व्यवस्था कराब से नहीं समस्त आशावादी रखिंट। कारण गतकाली आम जब देखा जिते प्रधानमंत्री बजेट अभिभाषण रोते से महिला मान प्रति व्यवस्था करा गोटे इशारा से कर जो मैंने भी अच्छा से गृहिणी कहतु जड़े बिजनेसमैन कथा कहतु जड़े करदाता हिसाब से टैक्स पेयर इनकम टैक्स पेमेंट करुवा महिला कथा कहतु समस्त आशा अच्छी ये बजेट रे किछि ना किछि बिल्कुल दिबेन्दु आशा अपेक्षा अनेक एवं बजेट रे किभली प्रतिफलन होउची ता ऊपर रहिबो समस्तंकर नजर। एवं आमे समस्ते जानिचे महिला जे केवल हांडीशाल रे सीमित से कथा नुहंती महिला व्यवसाय करूचंती महिला अनेक किछि नुआ किछि उद्योग आरंभ करूचंती। तेणु प्रतिटी क्षेत्र में महिला को स्वावलंबी करबा पई आउ आर्थिक प्रोत्साहन देबा पई सरकार निश्चय योजना करिवे ए होउची समर आह्वान। मो सहयोगी स्वागतिका अछंती वर्तमान समय महिलांकर आवश्यकता कौन एवं सरकार कहीं महिला को एते गुरुत्व दौरान से संक्रांत में आम जाना स्वागतिका। निश्चित भाव में विभु महिला बजेट को लेकिन अनेक आशा आकांक्षा रही एथर बजेट रे सेमती किछि प्रतिफलन देखा मिल पारे कहीं प्रधानमंत्री सबुबले महिला को फोकस कर यार भितर गत काली प्रधानमंत्री कहते महिला हुए तो किसी गोटे बड़ घोषणा करे किसी चर्चित कथा आम देखा जिते अनेक किसी स्कीम रही से दिगरे अधिक व्यवहार हो पारे। आप जानती लक्षपति दीदी को लेकिन बड़ घोषणा हो पारे सरकार का जो फोकस रही महिला मान को केमती लक्षपति कर महिला माने केमती आत्मनिर्भरशील हो पारे। तेणु लक्षपति दीदी को नहीं बड़ घोषणा हो पारे। ता सहित सुना रूपा उपरे कमी पारे कस्टम ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी जो आमदानी शुल्क कथा कहबा वर्तमान 6% रही तो से क्षेत्र में कहीं आप देखु धनी कहतु कि मध्यवित्त कि गरीब श्रेणी समस्त विशेष करके महिला भितर गोटे सुना को लेकिन समस्त भितर गोटे उत्साह रही तो ए क्षेत्र में सुना रूपा उपर हुए तो कस्टम ड्यूटी कमी पारे जहाद्वारा महिला माने विशेष करके उपकृत हेबे। सेहीपरि महिला सम्मान निधिर अवधि वृद्धि करे कहीं महिला सम्मान निधिर अवधि वृद्धि करागले महिला माने विशेष भाव में उपकृत हेबे। बड़ कथा होची कि महिला सशक्तिकरण को बूस्ट देबाकू बड़ घोषणा होई पारे जेतेबेले आपण जानती महिला माने सशक्त हेले देश सशक्त हेबो एवं प्रधानमंत्री नारा रही से महिला अनेक स्कीम आणुचंती प्रत्येक स्थान में जेतेबेले महिला मानक फोकस करा जाउची एवं महिला मानक आहुरी आत्मनिर्भरशील करबाकू आहुरी सशक्त करबाकू समानको बूस्ट देबाकू आहुरी बड़ स्कीम आनी परंती बड़ घोषणा आनी परंती महिला उद्योगी सृष्टि करने को लक्ष्य रही जितेबाला सरकार एवं अधिक अधिक विशेष करके सहरांचल नुहति ग्रामांचल महिला माने केमती निज निज स्टार्टअप आरंभ करें निजे जड़े उद्योगी हो पारे से सरकार मुख्य फोकस रही पारे कहीं ग्रामांचल विकास देशर विकास महिला सशक्तिकरण उपर सरकार जिते फोकस करेंगे गृहिणी गैस दर कमी पारे कहीं जिते गोटे गृहिणी चाहे मोर नित्य व्यवहार्य सामग्री डाली तेल ए सब कमु ता सहित गैस दर कमु गैस दर को नहीं आम देखीचे विभु केतरे अनेक राज्य में निर्वाचन समय इस्ताहार प्रतिश्रुति दि जाए जहाँ महिला भोट बैंक कहुए तो ये क्षेत्र में महिला गृहिणी गैस दर हुए तो कमाई पारती सरकार फोकस रे मिशन शक्ति मातृवंदना योजना ये जो महिला केन्द्रिक स्कीम गुड़िक रही से व्यवहार बढ़ाई पारती। आप जानती गत थर देखा कि 3 लाख कोटी टंकार व्यवहार कर महिला केन्द्रिक स्कीम एथर अधिक व्यवहार कर चर्चा होची कहीं जिते मिशन शक्ति मातृवंदना योजना ये सरकार कौभली भाव में बेस फलप्रद होती महिला केन्द्रिक स्कीम द्वारा महिला माने अधिक आत्मनिर्भरशील हो पारिछंती महिला
जीवन में देखिबा कि अनेक परिवर्तन होईची से क्षेत्र में हुए तो व्यवराध बढ़ाई पारंती गत थर जो व्यवराध कर जायतिला विभू एथर देखिबा कि व्यवराध आहुरी बढ़ाई पारंती बिल्कुल व्यवराध बढ़ी पारे एवं महिलांक ऊपर एक स्वतंत्र फोकस मध्य रही पारे ए बजेट रे बहुत बहुत धन्यवाद स्वागतिका आपनक समस्त सूचना पाई एवं दर्शक बंधु आमे मध्य लगातार भाव में बजेट अपडेट ऊपर नजर रखिछु आउ किछि समय पर उपस्थापन हेबा पाई जाउछि बजेट तेणु बजेट रु देशवासी आशा अपेक्षा वास्तव में केते दूर पूरण होउछि ताहा बजेट उपस्थापन हेबा परे जणा पड़िबो किंतु आशा अनेक रहिछि एवं बजेट रे किछि बड़ बड़ घोषणा मध्य होई पारे तबे एठी को छोट ब्रेक पाई आमे रहिबा एवं ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक जायका ऑर्गेनिक्स मल्टीग्रेन सत्तू हम समझते हैं आपकी हर एक पल की कीमत आउ किछि समय पर उपस्थापित हेबो बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अष्टम थर पर उपस्थापन करेंगे बजेट देशवासी बढ़ुची आशा एवं अपेक्षा कमिंग अप प्रायोजक जायका ऑर्गेनिक्स मल्टीग्रेन सत्तू हम समझते हैं आपकी हर एक पल की कीमत ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती 9 जण दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा आमे अछु ना अरुंधति ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती 9 जण दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा आमे अछु ना अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछु ना राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिंट सृष्टि होइछि विवाद सोनिया कहते राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पोर थिंग थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग बोली अभिहित करथिले राहुल गांधी उभयंकर मंतव्य को प्रधानमंत्री निंदा करने सहित कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बोली आरोप लगाई वर्तमान सुधा 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइले राशन कार्ड एक कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र मंत्री कहते कंट्राक्चुअल चाकरिया अर्थात 11 रु 12,000 दरमा पाउथिबा सरकारी चाकरियांकर राशन कार्ड कटिबो नाही स्वल्प वेतनभोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबार आवश्यकता नाही एनएफएस नियम अनुसार ग्रामांचल में जार मासिक रोजगार 10,000 टंका थिबो सेमाने राशन कार्ड फेराइबे नाही सुभद्रा योजना हिताधिकारी आगामी दिन में मुद्रा योजना भी लाभ नहीं पारे मुद्रा योजना किशोरी युवती 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे ऋण मिलुछि आ मुद्रा योजना ग्यारंटीर आवश्यकता पड़ुवा बेले सुभद्रा अर्थ ग्यारंटी भाव में काम कहुछि महिला व्यवसाय बाबद जणाइबाकू सुण सुभद्रा कुह सुभद्रा और सुभद्रा सेतु आरंभ करिछि महिला और शिशु विकास विभाग पुणी ब्रिक्स देश समूह को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प धमक डॉलर विकल्प चिंता कले किंबा विकल्प अपनाइले 100% कर लागू पाई प्रस्तुत रहिबाकू चेताई दैछन्ती ट्रम्प ब्रिक्स देश समूह को नजर रखा जाइछि जदि सेमाने डॉलर विकल्प सृष्टि करती किंबा अन्य कोनोसी मुद्रा को समर्थन दियंती तेबे ब्रिक्स देश समूहर उत्पाद उपरे 100% कर लागू हेबा निश्चित ब्रिक्स बाद अन्य जो देश ब्रिक्स द्वारा सृष्टि किंबा समर्थित मुद्रा को समर्थन करिबो से देश उपर मध्य 100% कर लागू कराजिबो नोबेल शांति पुरस्कार पर एलन मस्कर नाम अनुमोदित यूरोपर पार्लियामेंटर सदस्य ब्रांको ग्रिम्स मस्कर नाम अनुमोदन करिसेंती ए संक्रांत आवेदन सफल होइतिबा बेले नॉर्वेर नोबेल कमिटी याकू ग्रहण करिछि बाघ स्वाधीनता पई मस्कर अवदान यथेष्ट रहिछि तेणु तांकु नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करा जाउ बोली आवेदन उल्लेख करिसेंती यूरोपीय पार्लियामेंटर सदस्य ब्रांको ग्रिम्स बारवाटी देखा मिला नियार अंदाज बारवाटी अनुधान समय क्रिकेट खेली मुख्यमंत्री मोहन माझी मुख्यमंत्री बैटिंग करथिले पाखरे क्रीड़ा मंत्री और अन्य पदाधिकारी माने ताली मारी उत्साहित करथिले क्रीड़ा मंत्री सूरज सूर्यवंशी और ओसीए संपादक संजय बेहरा किसी समय खेलिथिबार देखा मिलता फेब्रुआरी 9 तारिख में बारवाटी खेल भारत इंग्लैंड दिनिकिया मैच पूर्व प्रस्तुतिर समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी अनुधान पर प्रस्तुति संतोषजनक मुख्यमंत्री कहते नुआ सरकार पाई यह प्रथम चैलेंज समस्त प्रकार आयोजन ठीक भाव में चली अवसर में मैच थीम सॉन्ग को लोकार्पित करिसेंती मुख्यमंत्री भुवनेश्वर ट्राफिक भिड़ ह्रास पाई प्राय 70,000 कोटी टंकार योजना करिसेंती सरकार नूतन योजना गुड़िकर डीपीआर तुरंत प्रस्तुत करने को
मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। प्लान अनुसार जदि बिहारु नंदनकानन पर्यंत एक एलिवेटेड कॉरिडोर हेबो। पटिया स्टेशन छकरु सुआंग मौजा पर्यंत दया वेस्ट केनाल रास्ता निर्माण, सुंदरपदारु जटणी रास्तार प्रशस्तीकरण एवं कल्पना छक म्यूजियम और शिशु भवन छकरे 3टी फ्लाईओवर सहित एजी छकरे एक अंडरपास निर्माण पई योजना रखा जाइछि। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर उपाधि को नहीं तेजिला विवाद। ममता को काढ़ी निगला महामंडलेश्वर उपाधि। किन्नर आखड़ा संघर प्रतिष्ठाता ऋषि अजय दास ममता महामंडलेश्वर उपाधि काढ़ी नहीं। एथिसह ममता को महामंडलेश्वर घोषणा करथिबा लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ठारू मध्य बजेट संपर्कित खबर को आगक बढ़ाइबा पूर्व नजर पकाइबा वर्तमान समय एक बड़ खबर उपरे कलाहांडी आसूची एक बड़ खबर। कलाहांडी पुलिस को मिली बड़ सफलता। सूचना मुताबक अंतराज्य डकायत गैंग को गिरफ्त करिछि कलाहांडी पुलिस। केवल गिरफ्त नुहे सेमानंक ठारू नगद 3 कोटी 51 लाख टंका जबत करा जायछि। एहा बाद बंदूक एवं गुड़ी मध्य जबत करिछि पुलिस। कलाहांडी आसूची ए संपर्कित एक बड़ खबर कारण 30 तारिख दिन अर्थात जनवरी 30 तारिख में एक बड़ धरणर डकायती होइथिला एवं ए समस्ते अर्थात ए डकायत माने सेथिरे संपृक्त रहिथिले। 8 जन अभियुक्तंकु वर्तमान सुधा पुलिस गिरफ्त करिछि एवं गिरफ्त परे सेमानंक ठारू जबत होइछि कोटी कोटी टंका अर्थात गोटिए कोटी अधिक टंका नगद 3 कोटी 51 लाख टंका जबत करा जायछि एवं ए होछि तार एक्सक्लूसिव फुटेज। 8 जन संपृक्त अर्थात 8 जन अभियुक्तंकु मध्य गिरफ्त करिछि पुलिस। दीपक सामल आम प्रतिनिधि आम सहित रहउछन्ति। दीपक पूरा सूचना कोन अछि? पुलिस किभली भाबरे योजना करिथिला, केमिति एमानंकु धरिला? देखंतु गत 30 तारिख रे धर्मगढ़ रे थिबा गोटे देशी मदभाटी डकायत होइथिला जोथिरे विपुल परिमाण रे टंका थिला भाटी रे। से टंका मध्य लूट होइता डकायत होइथिला। परवर्ती मुहूर्त रे जहां जना पड़िला घटनास्थल पुलिस पहुंची जहां तदंत करथिला। जो माने स्थानीय लोक माने थिले जो माने थिले से स्थान रे समाने पहिला कथा विलंबित रात्रि रे 8 जन डकायती आसीथिले। समाने बंदूक धरिथिले, खंडा धरिथिले एवं समानकु मानस देखाई तांको ठारू लूट करथिले। परवर्ती मुहूर्त रे ए नै कलाहांडी जिला पुलिस गोटे स्वतंत्र टीम गठन करथिला। से टीम आज सफलता पाई। विशेषकर अंतराज्य डकायत गैंग को गिरफ्त करछि कलाहांडी जिला पुलिस एवं जो माने डकायती करथिले 8 जन समस्त को पुलिस गिरफ्त करछि। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि सेमानक पाखरु नगद 3 कोटी 51 लाख टंका ता सहित बंदूक गुड़ी जो गाड़ी रे समान आसीथिले से गाड़ी सहित आउ मध्ये किछि मानस मध्ये जबत करछि पुलिस। एवं जो माने गिरफ्त होइछन्ति समस्त घर होछि झारखंड रे एवं सेमाने होछन्ति ताहिर अंसारी, हुसैन खान, जसम खान, शामीम अंसारी, बासुदेव गोपे आउ अनुज कुमार। अर्थात ये जो 8 जन डकायती थे एमाने गत 30 तारिख दिन धर्मगढ़ से गोटे देशी मद भाटी रे डकायती करते। परवर्ती मुहूर्त में पुलिस गोटे चैलेंज था जे केमिति डकायती को गिरफ्त करेंगे एवं पुलिस जो सीसीटीवी जांच करता जना पड़ा जो गाड़ी आसते अभियुक्त मैंने तार नंबर था JS 108P 4817 अर्थात झारखंड गाड़ी था। तेणु से गाड़ी को पुलिस ट्रैक करने आरंभ करता। परवर्ती मुहूर्त में प्रथम झारखंड रु ए गाड़ी को पुलिस ठाप करथिला एवं 2 जन को गिरफ्त करथिला एवं सेमान को पचरा कला परे पूरा गैंग जो समस्त सदस्य को कलाहांडी जिला पुलिस गिरफ्त करबा। बिल्कुल एवं गिरफ्त परे सेमानक ठारू एते परिमाण रो टंका जबत हवा ए मध्य निश्चय आश्चर्य करूची। अर्थात एमाने नियमित भाबरे लूट करूथिले। 30 तारिख दिन जो मदभाटी लूट होइथिला सेठारू मध्य एमाने निश्चय अनेक मात्रा रे टंका आनिचंती एवं सेमानंकु गिरफ्त करा जायछि। निश्चय आम आशा करिबा पुलिस आउरी खोलताड़ करिवो केवल एई 8 जन ना एमानंक बाद आउ केउ मानंकर संपृक्ति रहिछि से पर्यंत मध्य पहुंचिबो पुलिस। धन्यवाद दीपक। आउ किसी समय पर आगत होबा पई जाउछि बजेट एवं बजेट को नहीं सारा देशर अपेक्षा 2025-26 आर्थिक वर्ष पई अर्थात वर्तमान आर्थिक वर्ष अर्थात आगामी आर्थिक वर्ष में सरकार योजना कौन रोची, सरकार देश को क्यों पर्यंत देवाई चाहूँगी, कौन सब सरकार दृष्टिकोण रोची, ए तमाम दिग उपर समस्त नजर रही। आउ किछि समय पर लोकसभा आगत होगापी जाऊँगी बजेट 2025-26 बजेट आगत करेंगे निर्मला सीतारमण एवं बजेट पूर्व केंद्र कैबिनेट रे मध्य बजेट को मंजूरी मिल सारी। अर्थात यह हूँ चिराचरित प्रक्रिया कारण बजेट उपस्थापन पूर्व केंद्र कैबिनेट बसी थाए एवं से मोहर मारिबा परे अर्थात मंजूर मिलवा परे ही उपस्थापित होता है। अर्थात तमाम प्रक्रिया वर्तमान शेष हो सारा। केवल अपेक्षा निर्मला सीतारमण केतेबेले बजेट उपस्थापन करेंगे। आउ किछि समय पर देशवासी बजेट आसवाई जाऊँगी। किछि चित्र आमे
आम किसी समय पूर्वर चित्र आम आपको देखाऊँ कारण आम लगातार भाव में खबर पर नजर रखिलु एवं ए हूँ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जितेबाला राष्ट्रपति को साक्षात करने जाते प्रति थर आम देखे राष्ट्रपति दही खुआई स्वागत करि शुभेच्छा जनाई अर्थमंत्री को चलित थर आम चित्र देखुचे जितेबाला अर्थमंत्री पहुंची थे राष्ट्रपति पाखरे राष्ट्रपति अनुमोदन आवश्यकता रही है तेणु राष्ट्रपति से समय दही खुआई शुभेच्छा जनाई दही हिंदू धर्म बा सनातन धर्म एक परंपरा जहाँ को एक शुभर प्रतीक बोली विचार करा जाए अर्थात कौन शुभ कार्य जदि आप आरंभ करुँचा पूर्व जदि घर आप दही खाई बाहर शुभ होता है तेणु ए प्रक्रिया बा ए परंपरा को मध्य राष्ट्रपति आग को नहीं ए हूँ से समय चित्र। तेरे आज पुणी थे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करने जाउछंती एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए कौन नुआ कथा नुहे अर्थात लगातार भाव में रेकर्ड 8 थर बजेट उपस्थापन करिसेंती निर्मला सीतारमण एवं देशर अर्थनीति बा अर्थ व्यवस्था वर्तमान जड़े महिला हाथ में लगातार प्रायतः गोटे दशंधि धरी एवं यही समय भितर आम देखुचे देशर अर्थनीति बहुत आग को बढ़ी विश्व में अर्थव्यवस्था भारत निजर स्थिति जाहिर करिछि एवं भारत समस्तंकर दृष्टि आकर्षण मध्य करिछि एवं आमे चित्र रे आपनकु देखाउछु क्रमान्वये निर्मला सीतारमण किभली गोटिए परे गोटिए बजेट देशवासी उद्देश्य रे उपस्थापन करि चलिछंती ए प्रक्रिया आरंभ होइथिला 2019 मसियारु 2019 मसियार चित्र आपन सर्वप्रथमे अर्थात तले देखि पारुथिबे जेतेबेले प्रथम थर पई देश रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशवासी बजेट उपस्थापन करथिले सेहि बली परवर्ती समय रे क्रमान्वये 2020 21 22 23 24 एवं वर्तमान 25 को अपेक्षा किंतु 24 रे मध्य दुईटी बजेट आसीथिला कारण से वर्ष सरकार परिवर्तन होइथिला तेणु मोटामोटी भाव में यह हूँ 8 थर चित्र अर्थात आम टीवी स्क्रीन रे आपको देखा पूर्व 7टी बजेट उपस्थापन करिसेंती निर्मला सीतारमण एवं 2025 बजेट उपस्थापन करने पूर्व ए हूँ तार चित्र कारण तमाम प्रक्रिया वर्तमान धीरे धीरे आग को बढ़ुची राष्ट्रपति को साक्षात कर सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट को केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिल सारी अर्थात आउ किछि समय पर बजेट उपस्थापन होगापाई जाउछि आमे देश में जितेबाला महिला सशक्तिकरण कथा कहूचे महिला किभली आग को बढ़े से कथा कहूचे से दृष्टिकोण निर्मला सीतारमण देशवासी एक रोल मॉडल बा जड़े भिन्न महिला कहले भूल हम ना कारण तांकर मार्गदर्शन तांकर दक्षता तांकर कार्यशैली अनेक लोकों को प्रभावित करिछि तेणु से सर्वदा चर्चा रे रही आसिचंती एवं ए हूँ क्रमान्वये चित्र जेबे जेबे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करिसेंती। तेज आउ किसी समय पर बजेट उपस्थापन होगापाई जाउछि सबुआड़े आम देखुचे चर्चा सबुठी उत्साह समस्तंकर अपेक्षा बजेट रु आसुची कौन एवं ठीक यही समय आम किसी लोकंकर प्रतिक्रिया जानिबा जो माने कि ग्रामांचल में रुहंती बा छोट सहर में रुहंती सेमानंकर आवश्यकता कौन एवं से आवश्यकता को सरकार किभली भाव में बुझी पारिचंती ताहा मध्य बजेट रे प्रतिफलन हेबो तेणु बजेट उपस्थापन पूर्व किसी प्रतिक्रिया आम शुणिबा नयगढ़ रु। चलित वर्ष बजेट लोकाभिमुखी हम एपाई जेहतु सबुठी नहीं चर्चा जेहतु बजेट आरंभ हो जाए गाँ टू सहर सबुठी चर्चा हम कल्पना जल्पना कारण एथर बजेट कौन हम मध्यमती केते आसीबो कोटा सस्ता हम कोटा महंगा हम ताकू नहीं जेहतु चर्चा रही आम देखा गत वर्ष जो बजेट होता से युवक मान अधिक गुरुत्व दिया महिला मानक अधिक गुरुत्व दिया चाषी क्षेत्र में अधिक गुरुत्व दिया एथर कौन रोकस केंद्र बजेट रे एथर कौन फोकस रोशा कौन अधिक हम रेल क्षेत्र में केते आसीबो रास्ता घाट कृषि क्षेत्र में केते कौन रहिबो याकु नहीं जेते कल्पना जल्पना रही सहर रु गाँ सबुठी बर्तमान कहबा बजेट को नहीं चर्चा लगी रही आम अच्छु नयागढ़ दियापड़ा गाँव में एठार बजेट को नहीं लोक मध्य अनेक आशा आकांक्षा चर्चा चली सीधासख आलोचना करनबा कौन कहिबे जेतु बजेट उपस्थापन होउची बजेट को लेकिन आपनकर कौन रही कौन आशा कर आशा कर रेल कृषि किसी पड़ो अधिका आ शिक्षा नुह जीरो कहीं शिक्षार परिवर्तन जो घन घन होउची आगुरी थिला 5+ रे पिला ना लिखा एबे कौन कराई 3 आउ 4 आ कौन गोटे करके ये करनी खाली परिवर्तन सीना होउची पेन पेपर रे किंतु कार्य रे परिणत होबनी आउ किछि आलोचना करनबा आपण कोन भाबुछु एथर बजेट रे आपण कोन आशा रखुछंती बजेट रे हमें भाबुछु जे वर्तमान हमर एटा होची पहाड़िया अंचल
कौन से पानी सुविधा ना कृषक और जलसेचित उपर जदि सरकार ध्यान दियंते बोले आमर ये अंचल बहुत उपकृत होते सरकार गोटे बहुत किसी भल कम है बोले भावतु कितु आमर एवं देखो सामान्य पानी टी भी पाऊन लोक कि पानी टी रोचे जलसेच गोटे आज की केते वर्ष 30 वर्ष तले स्वर्गत भागवत बेर गोटे शुभ पकई बाद्रपुर से आज पर्यटन हो पारानी सेटा जो होता ये प्राय 20-30 खंड मौजा बहुत खुशी कृषि किसी उपकृत हो पारे भावुं कि कृषि क्षेत्र सरकार अधिक कृषि क्षेत्र और जल संपद ये दुईटा आमको निहाती दरकार ये बाबद बजेट रे किसी गोटे उपस्थापन अधिक परिमाण करा जाऊ आपनकर प्रतिक्रिया नेबी कहबा जेतु डबल इंजन सरकार कहूँ ओडिशा रे एथर ओडिशा पई बजेट रे अधिक भाबुचंती कि रखिथिबे सरकार आज्ञा आम डैमपड़ा ग्राम गोटे एमआई प्रोजेक्ट अच्छे ये प्रोजेक्टा बर्तमान करा दिने पिलांकर खेल पड़िया हो जाଉଛି पानी मोटे डैम रे रहउनी जहा द्वारा कृषक माने उपकृत हो पारुना तेणु आमे कहवा कथा आमर ये प्रोजेक्ट जदि सरकार सक्सेसफुल भाव में ना सरकार एथर कोन गुरुत्व देबे को क्षेत्र रे बजेट रे अधिक गुरुत्व दिया बोली भाबुछन आपण आया कृषि क्षेत्र रे जदि बजेट रे अधिक गुरुत्व दिया जाए ताले आम कृषक माने उपकृत हो पारे आपनकर प्रतिक्रिया नेबी कहबा जेतु बजेट आसीछि अनेक चर्चा आलोचना रहउछि आपनक मन रे कोन आसीछि एथर बजेट रे केंद्र बजेट रे कोन थिबो ओडिसा पई बजेट तो सब बेले जहाँ होची लोकाभिमुख ना बजेट तैयारी होची किंतु मूल लक्ष्य रोची किंतु से आसनटा को आम सदा बेले अख्तियार कर रखिबो भोट में सब नाटक लोकन को खाली भुआ बुलेकी बजेट उपस्थापन होची ठीक से तार इम्प्लीमेंटेशन हो पारुनी जहाँद्वारा लोक मैंने ठीक सुचारू रूपे फल पाई पारना जेथर डबल इंजन सरकार ओडिशा रे केंद्र रे दुईटी जगह डबल इंजन सरकार रही भावुं ओडिशा रे एथरक बजेट ओडिशा पे स्वतंत्र रहिबो रेल हो शिक्षा हो कोन कहबे रहिबो बोली आशा करा होची निश्चित भाबे काना जेति की समर्थन ओडिशा लोक देइचंती केंद्र सरकार बीजेपी सरकार को देइचंती आशा करा होची निश्चित भाबे बजेट टिक अधिकार रहिबो किंतु कृषि ऊपर रहिले कृषक मानु को प्रोत्साहन देले बहुत भल होंदा काना कृषक किए हेले गोटे तो माटी कादुआ हो मैंने खाइबा पाउछे ना तेणु कृषक को गुरुत्व देले कृषि उपरे बजेट अधिका हेले बहुत भल हम ना रेल क्षेत्र हवा दरकार ना रेल क्षेत्र भावुं पेट्रोल डीजल सबुथेर तो बर्तमान महंगा हो गला तेणु बजेट देखा जाऊ से तो करेंगे लोकाभिमुख करेंगे तो केते दूर कार्यकारी होची से सब आगु समय कहबो आपनकर प्रतिक्रिया नै आपन बजेट को नै कि आपन कोन भाबुछंती बजेट रे एथर कोन हेइबो ना बजेट कोन भाबु कृषि क्षेत्र बजेट ठीक चलिया कथा जे चलिबो ना आपन मन रे कोन आछी कोटा सस्ता हेतिबो सस्ता हबो ना सस्ता कोटा हम तो वोट देइछु वोट देकी जहा पाइलुनी आ को आ सस्ता को ओडिशा पई ओडिशा को सबुठ हीन दृष्टि देखुचंती सरकार अन्य देश को जहाँ दिया होची ओडिशा को तार 7 भागरू भागुटे मध्य मिलुनी किंतु ओडिशा रो सब नेइकी चलुचंती अधिका कौन कह तो तेल दर है 150 खाया दर 150 पेट्रोल है 100 डीजेल है 100 चलो केमती चाषी कृषक जी मूल्य गोटे आसूची मूल्याटा पाँच दिन को 3 घंटा काम करके 700 टका से नौ मूल्य किंतु मध्यवित्त लोक मैंने कौन करुँच स्वास्थ्य क्षेत्र में जदि अवहेला करते मध्यवित्त लोक से मरे बेसी हैरान हो जितेबाला सामूहिक विकास कथा कहूचे से जगार कौन क्षेत्र बा कौन वर्ग कौन दिग को बाद दे केवे सामूहिक विकास बा एक विकसित भारत गठन संभव नुहे तेणु आशा करा जाई पारे सरकार कृषि हो कृषक हुंतु रेलवाई हो भित्तिभूमि हो महिला हुंतु ए तमाम क्षेत्र उपर गुरुत्व देवे किंतु सबुठु फोकस रे रहिबे साधारण लोक बा आम आदमी जो माने अनेक चर्चा करती अपेक्षा करती एवं बजेट को नहीं प्रतिक्रियाशील हुंती तेणु आम आदमी बा साधारण लोकंकर अपेक्षा कौन एवं से नहीं सरकार प्रावधान कौन सब रही पारे मो सहयोगी स्वागतिका रोचंती स्वागतिका विस्तृत भाव में कहतु आम आदमी कौन चाहती एवं आम आदमी आशा अपेक्षा को सरकार केते दूर अनुध्यान करिसंती निश्चित भाव में विभू समस्त गोटे अपेक्षा थाए एथर बजेट लोकाभिमुखी हो लोकंकर बजेट हो एवं ताको आखि आगे रखी से सरकार हुए तो बजेट रे किछि गोटे बड़ घोषणा करि पारंती कौन घोषणा करिवे कहीं आउ किछि समय अपेक्षा जेतेबेले देशर बजेट आसीबो आय व्ययर हिसाब देवे सरकार संसद में बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण किंतु कहा पई कौन व्यवस्था करिसंती सरकार
कौन किछि बड़ घोषणा करिवे कि कौन नुआ किछि योजना आनिबे कि सरकार महंगा माड़ जेतले मध्यवित्त कथा कहतु गरीब लोक माने केते हैरान होउचंती दर वृद्धि लोकन को पॉकेट को बाधुची दर वृद्धि लोकन को टेंशन देलानी से महंगा माड़रू लोकन को मुक्ति मिलिबो कि जहाको समस्या चाहि रहिचंती विशेष करके कर देबार देखंतु जेतबे मिडिल क्लास कर गोटे बड़ भूमिका रहुची एवं प्रधानमंत्री को कथार लागुची कि तो प्रधानमंत्री मध्यवित्त को खुश करने को विभू किसी गोटे बड़ पदक्षेप नहीं पारती विशेष करके दर वृद्धि आम जिते मिडिल क्लास कथा मध्यवित्त कथा आलोचना करुचे विभू गोटे महंगा माड़ जो समस्त जमी अतिष्ठ है किसी लोकंर प्रतिक्रिया आम दर्शक मानक शुणाऊलु डिजेल पेट्रोल ता सहित नित्य व्यवहार डाली तेल गैस ये दर वृद्धि लोकों पॉकेट उपर बाधुची लोक मैंने केमती गोटे बजेट फ्रेंडली एथर हेपर समस्त नजर रोचे विशेष करके महिला मध्यवित्त किसी गोटे बड़ संकेत आसुवा नहीं पीएम सूचना दे सारी संकेत दे सारी कि मध्यवित्त हाथ में टंका रहू जहाद्वारा से क्रय कर सामर्थ्य रहाद्वारा देशर अर्थनीति आहरी सुदृढ़ एवं एथर आम कहीपर विभू फोकस रही पारती से मध्यवित्त जो मानकर देशर अर्थनीति मानकर बेस योगदान रही महिला मध्यवित्त को सशक्त करने को नुआ योजना हुए तो आनीपारती सरकार जमी आयकर सीमा छाड़ अनै बसी मध्यवित्त खर्च कर सामर्थ्य मध्यवित्त हाथ में रहिले अर्थनीति बेस भल बोली एक्सपर्ट माने लगातार भाव में कही आसुछंती एवं ताकू आखि आगे रखी हुए तो सरकार किछि बड़ पदक्षेप नहीं पारती ध्यान दे पारती कृषक शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ी पारे निजुक्ति उपर फोकस दे पारती निजुक्ति क्षेत्र किपरि व्यापक हेबो से नहीं हुए तो आम कहीपर विभू गोटे बड़ घोषणा एथर बजेट रु होइपरे बजेट रूपरेख कौन रहिबो जहाँ समस्त नजर रही स्वास्थ्य क्षेत्र उपर फोकस करा जाय पारे कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र उपर अधिक फोकस करा जाऊ बोली समस्ते दाबी रखिछंती सेहीपरि कृषक होउछंती आम देशर मेरुदंड बैकबोन तेणु एथर 2025-26 बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन मोदी 3.0 सरकार पाई सबुठु बड़ चैलेंज होउची कि मिडिल क्लास ए मध्यवित्त आशा को सेमाने केमती पूरण करि परिबे बजेट रे लाघव हेबो कि दर वृद्धिर बोझ कहीं लगातार भाव में कहूँ दर वृद्धिर बोझ जो लोक मैंने केमती अतिष्ठ हेलेनी एथर बजेट रे टिकस दाता को केते रिहाती मिलिबो जहाको समस्ते अपेक्षा करिसेंती किंतु बड़ कथा होउची कि आउ मात्र किछि समय पर अर्थमंत्री बजेट पेड़ी खोलिबो को क्षेत्र को अधिक प्राधान्य दिया जिवो तो बजेट रे उपस्थापन करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन कृषि क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा रिटेल क्षेत्र उपर अधिक फोकस दिया जाय पारे विभू क्षेत्र उपर सरकार गुरुत्व देवे जो आम सामूहिक विकास कथा कहूचे विकसित भारतर कथा कहूचे प्रतिटी क्षेत्र प्रतिटी दिग उपर सरकार निश्चय गुरुत्व देवे तेणु ता उपर समस्त नजर रहिबो केउ क्षेत्र बा केउ वर्ग को यथेष्ट बा सर्वाधिक गुरुत्व दौरान एवं सरकार व्यवहार कौन रोचे प्रावधान सब कौन रोचे एवं आगामी समय विजन कौन रोचे ए बजेट रु गोटे संकेत मिल जिवो एठी एक छोट ब्रेक पाई आम रहिबा और ब्रेक पर देखिबा कमिंग अप प्रायोजक जायका ऑर्गेनिक्स मल्टीग्रेन सत्तू हम समझते हैं आपकी हर एक पल की कीमत। बजेट उपस्थापन पूर्व केंद्र कैबिनेट रे मिलिला मंजूरी आउ किछि समय पर आगत हेबो अर्थनैतिक बजेट 2025-26 अष्टम थर पर निर्मला सीतारमन आगत करिवे बजेट। कमिंग अप प्रायोजक जायका ऑर्गेनिक्स मल्टीग्रेन सत्तू हम समझते हैं आपकी हर एक पल की कीमत। राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिछंती ताकु नहीं सृष्टि होइछि विवाद। सोनिया कहछंती राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पोर थिंग थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती 9 जण दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा आमे अछु ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती 9 जण दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा आमे अछु ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछु ना। राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिछंती ताकु नहीं सृष्टि होइछि विवाद। सोनिया कहछंती राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पोर थिंग थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग बोली अभिहित करथिले राहुल गांधी। उभयंकर मंतव्य को प्रधानमंत्री निंदा करने सहित कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बोली आरोप लगाइछंती। वर्तमान सुधा 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइले राशन कार्ड एक कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते कंट्राक्चुअल चाकरिया अर्थात 11 ରୁ 12,000 दरमा पाउथिबा सरकारी चाकरियांकर राशन कार्ड कटिबो नाही।
स्वल्प वेतनभोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबार आवश्यकता नहीं। एनएफएस नियम अनुसार ग्रामांचल में जार मासिक रोजगार 10,000 टंका थिबो सेमाने राशन कार्ड फेराइबे नहीं। सुभद्रा योजना हिताधिकारी आगामी दिन में मुद्रा योजना भी लाभ नहीं पारे। मुद्रा योजना किशोरी युवती 50,000 टंका पर्यंत बिना सुधरे ऋण मिलुछि। आ मुद्रा योजना ग्यारंटीर आवश्यकता अरुंधति ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती। 9 जण दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा। आमे अछु ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो शुभ विवाह ऑफर सोना रूपा और हीरा गहनार मेकिंग चार्जेस रे 50% पर्यंत रिहाती। 9 जण दंपति पाइबे फॉरेन ट्रिप रो शानदार ऑफर सह प्रत्येक वेडिंग किनारे वीआईपी लगेज संपूर्ण मागणा। आमे अछु ना। अरुंधति ज्वेलर्स रो 5 स्टार प्रॉमिस आमे अछु ना। एवरग्रीन राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो प्रतिक्रिया रखिंट सृष्टि होइछि विवाद। सोनिया कहते राष्ट्रपति थकी जाइथिले विशेष किछि कहि नथिले ताहा पुओ ठीक थिला और राष्ट्रपति भाषण को बोरिंग बोली अभिहित करथिले राहुल गांधी। उभयंकर मंतव्य को प्रधानमंत्री निंदा करने सहित कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बोली आरोप लगाई। वर्तमान सुधा 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइले राशन कार्ड एक कहते जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहते कंट्राक्चुअल चाकरिया अर्थात 11 ରୁ 12,000 दरमा पाउथिबा सरकारी चाकरियांकर राशन कार्ड कटिबो नाही। बजेट उपस्थापन पूर्व केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी मिल सारी। किसी समय तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसीथिला केंद्र कैबिनेट जोठी चिराचरित प्रक्रिया कारण बजेट उपस्थापन पूर्व पारित होगा जरूरी। तेणु प्रधानमंत्री अध्यक्षतार बसीथिबा केंद्र कैबिनेट रे बैठक रे बजेट को अनुमोदन मिल सारी। अर्थात किसी समय पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशवासी उद्देश्य 2025-26 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करने जाउछंती एवं देशवासी अपेक्षा रही विशेषज्ञों अपेक्षा रही कारण ए बजेट अनेक प्रकार संकेत देव अनेक प्रकार संदेश दे पारे। आगामी समय सरकार योजना बा विजन कौन अच्छी 4 वर्ष परवर्ती समय सरकार कौन सब योजना करिपारंती ए बजेट किछिटा धारणा दे पारे बा किछिटा संकेत दे पारे। तेणु तृतीय पाळीर प्रथम बजेट समस्त दृष्टिकोण यथेष्ट गुरुत्व रखुची। वर्तमान समय देश में आवश्यकता देशर दरदाम वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने ए सरकार प्राथमिकता है। तेणु ए सब उपरे सरकार बड़ पदक्षेप नहीं पारंती ए आशा समस्तंकर रही एवं बजेट रे किछि आश्चर्य कला भली घोषणा होई पारे बा से भली किछि बड़ घोषणा होई पारे। गोटे पटे आयकर सरलीकरण और आयकर व्यवस्था को नहीं अनेक चर्चा और कहुच्छी कि स्लाब रे सरकार बड़ किछि परिवर्तन करि पारंती। जो निम्न मध्यवित्त बा मध्यवित्त माने टिकस परिसरभुक्त होउचंती एवं टिकस रो बोझ पाउचंती सेमानंकु होयतो किछिटा आश्वस्ति मिली पारे। सरकार ए दिगरे कार्य करि पारंती ए आशा एवं अपेक्षा समस्तंकर रहिछि। तेणु बजेट रे यार प्रतिफलन किभली होउछि ता उपरे मध्य रहिबो समस्तंकर नजर एवं किछि चित्र आमे आपनकु देखाउछु कारण बजेट पूर्व समस्त प्रक्रिया त्वरान्वित होई सारिछि। मात्र अपेक्षा केवल बजेट उपस्थापन को किछि समय पर अर्थमंत्री बजेट उपस्थापन करेंगे और ये हूँ आजिकार चित्र कारण आम सकालू देखुचे सबकिछि चलचंचल देशवासी अपेक्षा रही गणमाध्यम हो विभिन्न जगार खटी सबुठी चर्चा कि बजेट रु आशा कौन अच्छी बजेट किभली होई पारे। एक साधारण बजेट आम आदमी होई पारे कि लोकाभिमुखी बजेट होई पारे कि ए चर्चा भितर आम देखुचे वर्तमान प्रक्रिया आगक बढ़ुची कारण किछि समय तले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साक्षात करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और तापर परे केंद्र कैबिनेट बैठक बसीथिला जोठी बजेट को अनुमोदन मिल सारी एवं आउ किछि समय पर उपस्थापन हेबापई जाउची। तेणु आम प्रतिटी वर्ग प्रतिटी क्षेत्र उपर गुरुत्व दौचु एवं प्रतिटी लोकंकर कथा मध्य शुणुचु वास्तव में से चाहती कौन एवं तांको आशा विश्वास को सरकार ता उपरे केते दूर छिड़ा होचंती। तेणु ब्रह्मपुर किछि आम प्रतिक्रिया शुणिबा ब्रह्मपुरवासी बा किछि लोक जनसाधारण से कौन कहउचंती बजेट को नहीं अपेक्षा कौन अच्छी। कैलाश आम प्रतिनिधि अच्छा जे कि ए संपर्क में अधिक सूचना दौरान
संसदरे उपस्थापित हम बजेट और मध्यवित्त परिवार ठार आरंभ कर धनिक श्रेणी परिवार समस्त अपेक्षा कर बजेट रे केउं भली लोक मान सुविधा हम विशेषकर महिला ठार आरंभ कर जी रही मध्यवित्त परिवार से अधिक सुविधा हम जहाँकि सूचना मिली तेज आम बर्तमान अच्छे ब्रह्मपुर गोसानुआग अंचल जो मनोरंजन पात्र फैमिली अच्छे फैमिली सहित अच्छे देखिए जो सदस्य मैंने निजर जो प्रतिदिन जो नित्यक्रम रही नित्यक्रम आरंभ कर जहाँकि आलोचना करवा प्रथम मनोरंजन पात्र सहित सार सहित आलोचना करवा सार कौन कहे आज जेहेतु बजेट उपस्थापन हम संसद में कौन आशा रखुच्च नुआ बजेट को नहीं कौन कमी पारे कौन बढ़ी पारे कौन सुविधा हम मो ना हूँ मनोरंजन पात्र मो स्टाम्प मेंबर अच्छी मोर मासिक आय 20,000 टू 30,000 भितर एंटर फैमिली चलवाटा आजिका जुगे बहुत असुविधा होची मध्यवर्ती परिवार जो आर्थिक दरदाम वृद्धि होची से उपरे मु माने बहुत क्षुब्ध अच्छी एथर मु आशा करुच्ची ब्रह्मपुर नहीं सारा ओडिशार बजेट टे माने सब प्रकार सुविधा हेले आम फैमिली चल पार माँ सहित आलोचना करें माँ कौन कहे पनीपरिया काम आरंभ हो रंधा काम कौन कहे जेहेतु आज बजेट उपस्थापन हम कौन आशा रखुच्च विशेषकर पूर्व अपेक्षा बर्तमान जदि कह रोषेशाल परिपरिया मोर हजबैंड 20,000 ରୁ 30,000 पर्यंत इनकम कर एते दर बढ़िलानी तेल जाई सब किछि बढ़िलानी गैस सब किछि बढ़िलानी ताई रे आमे चलियाडा कष्ट होउची तार चलियाडा कष्ट होउची आमे रेट कमिले एगुडा टिके आमे मध्यम परिवार भितरे रहूचु एगुडा टिके कमिले आमे टिके उपकृत हेइथांडु एथर बजेट रे हमर जो इनकम को देखिकी टिके सब प्रकार टिके सहाय्य कले आमे टिके उपकृत हेइथांडु सहित परिवार भौणी जन अच्छे भौणी कौन कह आप कौन काम कर बर्तमान कौन रोजगार कर रोजगार चलियाडा केते सुविधा होची मु गोटे प्राइवेट कंपनी जॉब करछि मोर सैलरी बहुत कम 15,000 टका मासकु सेतिरे माने मोर इंटरनेट मोर तेल मोर अन्य खर्च सब देखिया पड़छि जोटा कि किछि भी होउनी माने सेविंग्स आ किछि रहउनी तो एबे जो बजेट आसुछि आज माने हमर मिडिल क्लास पई आउ टिके बढ़ेले माने ठीक हबो बोली आमे भाबुछु जदरा आमे 2 पैसा सेव करि परिबो हम फ्यूचर पई जदि कह जेहेतु गोटे बढ़िला झील कस्मेटिक सामान जदि कथा कह आप प्रतिदिन अधिक व्यवहार कर टैक्स दिन को दिन बढ़ी जाता किणवा केते कष्टकर जमती आमे तो जानचे आगरो एते सब नथिला एबे दिनो दिन टैक्स जीएसटी सब बढ़ी बढ़ी चलीची सेटार भी माने किनिया को तो आमे बाध्य यूज करिया को बाध्य तो सेटार भी टिके कमिले जीएसटी आ टैक्स कमिले आमे माने खुशी हबो एथर बजेट ऊपर ए ऊपर किछि गोटे आसु बोली आमे आशा रखिछु मनोरंजन को प्रो मध्ये अछन जे कि जन मेडिसिन दुकान मध्ये कोचन आलोचना करबा कोन कहबे मेडिसिन क्षेत्र रे कौन नुआ आसवा आवश्यक जोड़ा कि आपन को एबे वर्तमान मंथली इनकम केते होची जोड़ा कि आपन परिया चला पे केते सुविधा होची ना कम मना रमाकांत पात्र मु मेडिसिन बिजनेस करे मोर मासिक आय 20,000 ରୁ 30,000 टंका आउ सबु क्षेत्र के मेडिसिन नहीं सबु क्षेत्र रे जीएसटी टैक्स सबु क्षेत्र रे बढ़ी बढ़ी जाउची एक्साइज ड्यूटी भी बहुत पड़ुची सब बढ़ी बढ़ी जाउची मो हिसाब रे स्वास्थ्य आउ शिक्षा क्षेत्र रे पूरा फ्री कर दवा कथा सब जिंस फ्री करबा कथा तो सेति में बजेट रे एथिला साधारण लोकंक प्रतिक्रिया अर्थात सेमानंकर आशा अपेक्षा कौन रही आपण माने सीधा सड़क शुणुले और एपटे आम चित्र आपन को देखाऊँ वर्तमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करने संपूर्ण भाव में प्रस्तुत किसी समय तले केंद्र कैबिनेट रे पारित हो सारी अर्थात मंजूरी मिल सारी राष्ट्रपति को पूर्व साक्षात करते पेड़ी खोलने जाऊँगी तेणु देशवासी किसी दिन धरी जो चर्चा आलोचना करुले बजेट को नहीं बजेट रे कौन हो पारे बजेट रे नूतनत्व कौन करि सरकार क्यों क्षेत्र उपर अधिक प्राधान्य दि जापे फोकस करा जाय पारे सरकार 5 वर्षिया विजन कौन हो पारे बजेट रे कौन सब धारणा सृष्टि होउची ए तमाम चर्चा उपर अवसान घटिबा जाउची कारण आउ किछि समय परे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2025-26 बजेट उपस्थापन करने जाउचंती एवं ए होउची ता पूर्वरु चित्र अर्थात
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संपूर्ण प्रस्तुत सबुकिछि हिसाब किताब सरी जाइछि देशवासी कौन सबू आणुचंती नुआ देशवासी कौन सबू खुशी दौरान ता उपरे रही नजर एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण क्रमान्वये किभली बजेट उपस्थापन करिसंती ए होछि तार चित्र 2019 मसिया प्रथम थर पई अर्थमंत्री भाव में निर्मला सीतारमण देशर साधारण बजेट उपस्थापन करथिले एवं ता परठारु से प्रक्रिया बंद होई नाही शेषरे 2025 रे आज आमे पहुंचीचे अर्थात 25-26 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करबा पई जाउछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं 2024 रे आमे जानिचे जे वर्ष सरकार परिवर्तन होइथिला अर्थात चलित विगत वर्ष जेउठी दुई निर्वाचन पर सरकार परिवर्तन होइथा एवं से वर्ष निर्वाचनी वर्ष आमे देखे दुईटी बजेट एवं से दुईटी बजेट मध्य उपस्थापन करथिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं परे परे आज बजेट पुणी थे उपस्थापन करने जाऊँगी तेणु निश्चय एक ऐतिहासिक मुहूर्त देशवासी एवं खास करके निर्मला सीतारमण महिला मानों जो महिला को नहीं चर्चा महिला सशक्तिकरण नहीं अनेक कथा कहुच्छी तो आशा करा ए चित्र निश्चय समस्त उदाहरणीय हो क्रमान्वये हूँ 2019, 2020, 21, 22, 23 और 24 दुई थर एवं एथर अर्थात 25 उपस्थापन करने जाऊँगी बजेट निर्मला सीतारमण आउ किछि समय अपेक्षा देशवासी उद्देश्य बर्तमान बजेट उपस्थापन होगापाई जाऊँगी सबकिछि प्रक्रिया शेष हो सारी राष्ट्रपति को साक्षात करने ठारू केंद्र कैबिनेट रे मंजूरी मिलवा बजेट्र तमाम प्रक्रिया बा प्राथमिक प्रक्रिया जहाँ रही था उपस्थापन पूर्व समस्त प्रक्रिया शेष हो जाए केवल अपेक्षा उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एवं लगातार भाव में प्रतिटी दिग को नहीं अनेक मात्रा रे चर्चा होची रेलवाई क्षेत्र में कौन रोचे ओडिशा क्षेत्र में अनेक चर्चा कारण डबल इंजिन सरकार आह्वान दि जाइथिला एवं वास्तव में ओडिशार जनसाधारण डबल इंजिन सरकार पर आशीर्वाद देइचंती तेणु डबल इंजिन सरकार राज्यवासी कौन सबू पाउचंती सुविधा सुजोग बा से किसी उपहार रोचे कि ता उपरे नजर एवं बर्तमान आम सीधा सड़क चित्र देखु पार्लियामेंट जो अधिवेशन आरंभ हो सारी सदस्यगण बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है नहीं माननीय अखिलेश जी आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ ये उचित नहीं है ये उचित नहीं है अखिलेश जी प्लीज मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे प्लीज नो ये तरीका ठीक नहीं है नो राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी नो तरीका Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Viksit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years
and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Viksit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Viksit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses.
Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC.
For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors,
our government will undertake specific policy and facilitation measures to enhance the productivity, quality and competitiveness of India's footwear and leather sector. A focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Odia, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 National Centers of Excellence for Skilling will be set up
with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms.
Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Viksit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector.
Udan regional connectivity schemes. Udan has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget,
there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years,
our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped central KYC registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023,
More than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients.
I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign
origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Viksit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties.
I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes
including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers
due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitaraman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitaraman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
এবং বজেটে কোন সব হেডলাইন্স রয়েছে অর্থাৎ কোন সব অর্থমন্ত্রী পেড়ি খোলিছন্তি তার পুরা চিত্র আমি আপনার দেখাউছু এবং প্রতিটি অপডেট আমি আপনার দেউছু। বজেটে বড় বড় সব ঘোষণা হয়েছি, কেউ ক্ষেত্র পাই কেতে অনুদান হয়েছি তার চিত্র আমি দেখাউছু। 12 লক্ষ টঙ্কা পর্যন্ত আয়কর ছাড় এ হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবুঠু বড় খবর। 12 লক্ষ টঙ্কা পর্যন্ত যদি আপনার রোজগার রয়েছে তাহলে আপনার কৌশি টিকস পৈঠ করা পড়ব না, অর্থাৎ 12 লক্ষ পর্যন্ত টিকস ছাড় করেছেন কেন্দ্র সরকার। বজেটে আয়করকু নেই আসিছি বড় ঘোষণা, যা নেই তমাম চর্চা হেউথিলা। 7,75,000 পুরোনা স্লাবে রয়েছে, অর্থাৎ 7,75,000 পর্যন্ত টিকস দেওয়া পড়ুনথিলা। এ সীমাকু বড়াইছেন সরকার। 12 লক্ষ পর্যন্ত যদি আপনার রোজগার অছি তাহলে আপনার কৌশি টিকস পৈঠ করা পড়ব না। বর্তমান সময়ের দেশবাসী সবুঠু বড় খবর, কারণ বজেটে আসিছি এ সংক্রান্তীয় বড় ঘোষণা। করদাতা মিলিছি বড় আশ্বস্তি। 12 লক্ষ টঙ্কা পর্যন্ত যদি আপনার আয় অছি তাহলে আপনার কৌশি টিকস পৈঠ করা পড়ব না। পূর্বর এ সংক্রান্ତରେ তমাম চর্চা হেউথিলা, সমস্ত নজরে রয়েছে আয়কর স্লাবে সরকার কোন পরিবর্তন করবে এবং এর ভিতরে বড় খবর আসিছি কি 12 লক্ষ পর্যন্ত যদি আপনার রোজগার অছি, অর্থাৎ মাসকু যদি আপনার লক্ষে টঙ্কা রোজগার তাহলে আপনার কৌশি টিকস দেওয়া পড়ব না। এ হচ্ছে বর্তমান সময়ের সবুঠু বড় খবর বজেটু যা আসুচি। निश्चित भाव में वर्तमान समय बजेट को लेकिन समस्त भितर जो उत्साह थिला तो बजेट को नहीं बड़ खबर आसी मासिक 1 लाख आयकारी को टिकस पड़बनी। अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती, अर्थात ये गोटे बड़ घोषणा। 12 रु 16 लाख जाए 15% टिकस मिलिबो, जहां बजेट को नहीं ब्रेकिंग आपन सामने रखुछु। सेहीपरि 16 रु 20 लाख जाए 20% रहिबो। ता सहित आम देखुछु बजेट रे अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती ता सहित बजेट रे आम देखिलु आहुरी मध्य बड़ घोषणा करा जायछि विभू, काहेकि ना अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती कि आयकरदाता जो कथा अनुमान कर जाउतिला ताहा एथर प्रतिफलन देखबा मिलिछि। एवं अनेपटे बिहार पई मध्य बड़ घोषणा करा जायछि। नीतीश को खुशी करबा पई एथर बजेट रे बड़ घोषणा करा जायछि। बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन देशर बजेट रे बिहार राज्य पई बड़ घोषणा करिसेंती। अर्थमंत्री कहिसेंती राज्यर भविष्य को दृष्टि रखी चाहिदा को पूरण करिबा लागि एभली बड़ निष्पत्ति ने जायछि, किंतु आयकर स्लैब को नेकी समस्तंकर जो अपेक्षा थिला 24 लाख रु अधिक आय हेले 30% टिकस देवा को पड़िबो, जहां बजेट को नहीं वर्तमान लेटेस्ट खबर आसुची। बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ए बड़ घोषणा करिसेंती। तो आर भितरे 12 लाख टंका जाय आपनको आय कोनोसी इनकम टैक्स देवा को पड़िबो नाही, अर्थात 12 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़ नहीं बजेट रे अर्थमंत्री वर्तमान समय बड़ घोषणा करिसेंती। आमे कहि परिबा आयकर दातांको पई ए गोटे खुशीर खबर। 12 लाख टंका जाय कोनोसी आयकर देवा को पड़िबो नाही, जहां को समस्त अपेक्षा थिला वार्षिक 12 लाख टंका आय जो मानक रही से को टैक्स देवा पड़ो नहीं। 12 रु 16 लाख जाए 15% 15% आप टिकस देवे। से 16 रु 20 लाख जाए 20% और 20 रु 24 लाख जो मानकर से 25% टिकस देवे बोली अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। नुआ टिकस व्यवस्था कौन रही केते आपण टिकस देवे से संक्रांतीय समस्त तथ्य आपण मानक सामने राजीव साहू वरिष्ठ चार्टार्ड अकाउंटेंट आम सहित जोड़ुंट। श्रीजुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची। जो आशा करा सरकार स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती से आशा आमे समस्त देखुचे फलवती होउची। प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रहिबो आपनकर? नहीं मु भाबुची जहां हमें सब एक्सपेक्ट करूथिले मु इंडिविजुअली बहुत खुशी, कारण मिडिल क्लास को जो उपेक्षित होइथिले से माने अनेक वर्ष धरी एजा गोटे बहुत बड़ सपोर्ट बहुत बड़ रिकॉग्निशन मिडिल क्लास को एवं जो डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट देखे आम देखा पाइलु 7 लाख रु 12 लाख बा लक्षे टंका पर्यंत जार इनकम अच्छी ताकू टैक्स देवा पड़ो ना। एवं तापर मध्य जो 12 रु 16 लाख 16 रु 20 लाख 20 रु 24 लाख ये जो स्लैब रे मध्य रिडक्शन करागला, टैक्स इम्पैक्ट कमे दिगला। से वर्ष को जड़े लोक लक्षे रु 2 लाख पर्यंत जो बेनिफिट पाउची सेटा आसीबो जे कंजम्पशन बढ़ाइबा मिडिल क्लास हाथ में अधिक सरप्लस रखा एवं जहाँ जहाँ आम आशा करुले बरं ताठू अधिका मिली। एवं मु भावुची एथिरे मध्यमित माने निश्चय खुशी रे रहिबे, सैलरीड लोक माने खुशी रे रहिबे, कारण तांको पई जो एक्सपेक्टेशन थिला एक्सपेक्टेशन को राजीव साहू आम जो कथा आलोचना करुले होता सरकार मध्यवित्त को खुश करने गोटे बड़ घोषणा करिसेंती बोली कहजिबो कि
କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହକ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସେଟା ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟମିତଙ୍କୁ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟମିତ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଧ୍ୟମିତ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବ କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଯେତିକିଟା ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା କଥା ପାଇନଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପେନସେଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ଖୁସି ରହିବେ बिल्कुल एवं निश्चय ए होची बड़ खबर जदि जनकर रोजगार मासिक 1 लाख टंका पर्यंत अच्छी 1 लाख टंका अच्छी ताहेले मध्य से टिकस देबे नाही अर्थात वार्षिक 12 लाख टंका पर्यंत कोनोसी टिकस पैठ करबा पई पड़िबो नाही एहा बाद मध्य टिकस स्लैब रे अनेक परिवर्तन आसीची कारण पूर्वरु 15 लाख ऊपर जदि रोजगार अच्छी 30% टिकस दबा पई पड़ुथिला जहाकु नै चर्चा हेउथिला एवं ए स्लैब रे मध्य परिवर्तन करा जायछि 24 लाख रु जदि अधिक टंका रोजगार अछि ताहेले 30% टिकस दबा पई पड़िबो जहाकु नै चर्चा करा जाउथिला बा अनुमान करा जाउथिला बजेट रे तारो प्रतिफलन आमे देखुचे श्रीयुक्त राजीव साहू एहारो प्रभाव जनसाधारण को ऊपर किभली भाबरे पड़िबो देशर अर्थनीति ऊपर केमिति पड़िबो एवं केंद्र सरकार किछिटा टिकस आदाय हरई पारंती ए आकलन मध्य करा जाई पारे देख एटा जो प्रश्न जे एटा साधारण रे निश्चय ग्रहणीय होबो मध्यमित गोटे बड़ सेक्शन से माने एथिरो बेनिफिटेड हेबे जो हासिल थिला जो 12 लाख पर्यंत जो टिकस रिटर्न फाइल करिया कथा सेथिरे मध्य कोल करा जायछि एटा कंजम्पशन बढ़ेबो तेणु सबु वर्गर मध्यमित जो आरंभ करी धनी एवं गरीब लोकों पई एटा गोटे जेतु डिमांड बढ़ौछि कंजम्पशन बढ़ौछि सेमाने मध्य एथिरु लाभवान हेबे एवं समस्त जेतेबेले खुशी रहिबे समस्तଙ୍କର जेतेबेले प्रोडक्टिविटी बढ़िबो कंट्रीब्यूशन बढ़िबो सेतेबेले देश मध्य खुशी रहिबो एवं जो 1 लाख कोटी टंका सैक्रिफाइस करूछंती सरकार सेटा मोर देन कंपेनसेट हबो अन्य बाटरे कारण तापरे जो जीएसटी जो कंजम्पशन करा जिवो सेथिरो जीएसटी मध्य आदाय करा जिवो इंडस्ट्री माने बेनिफिटेड हेबे सेमाने मध्य अधिक प्रॉफिट करिवे सेमाने मध्य अधिक टिकस देबे तेणु ओवरऑल आपण जदि देखिबे मो भाबुची सरकार खूब माने भलो आकार रे अर्थात राजीव साहू जहाँ सरकार का फोकस थिला लोकन को हाथ रे टंका रहू मध्यवित्त माने केमती उपकृत होई परिबे ताहा एथरो बजेट रे हमें कहि परिबा प्रतिफलन देखिबा को मिलिची निश्चय भावे सरकार सामग्रिक भावे इनफैक्ट बजेट को जदि देखिबे एटा गोटे बोधे 10 रु 10 मार्क पाइबो एवं ता संगे संगे ए जो डिमांड थिला जे मध्यमित एथिरु किभली उपकृत हेबे एवं सेटा को से माने सरकार खूब भलो भाबरे मध्यमित को रिकॉग्नाइज करूछंती मध्यमित को बेनिफिट मध्य देइछंती एवं सेथिरे सामग्रिक भावे अर्थनीति रे गोटे भलो परिवर्तन आसीबो गोटे सकारात्मक चिंताधारा रे गोटे सुफलन आमे देखि परिबा तार आउटकम रे ए जो बजेट रे एवं बजेट रे जो जो प्रावधान रही सेगुड़िक सबू ग्रोथ ओरिएंटेड आमर जेतेबेले विकसित भारत पाई जहाँ जहाँ दरकार बजेट तार प्रतिफलन आपण देखुचंती तेणु निश्चय स्वागत करिवे एवं बजेट रु बड़ खबर आसुची टिकस व्यवस्था रे आमे देखुचे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि स्लैब रे परिवर्तन करा जायछि एवं ए संक्रांत रे अर्थमंत्री मध्य घोषणा करिसंती बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त राजीव साहू आपनक प्रतिक्रिया पाई तेबे दर्शक बंधु देशवासींकर जो अपेक्षा रहिथिला अर्थात मध्यवित्त जो माने टिकस परिसरभुक्त थिले सेमानकर आशा थिला कि स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती सरकार एवं तार प्रतिफलन देखुचे बड़ खबर हेउची 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपनकर वार्षिक रोजगार अछि ताहेले कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही टिकस संक्रांतीय घोषणा समय कोन कहिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपण सुनि नियंतु July 2000 tax regime. I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%,
12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती एवं ये टैक्स को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती इनकम टैक्स विशेष करके जो माने देखो आयकर दातांको पई एक बड़ खबर बोली बिबु कुआ जाई परिबो जेतेबे देखिबे कि 12 लाख टंका पर्यंत आउ कोनोसी देखिबे कि आयकर देबा को पड़िबो नाही ता सहित बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख पर्यंत टैक्स फ्री कर दैछंती मोदी सरकार केवल सतिकी नुहे 12 रु 16 लाख पर्यंत 15% टैक्स दिया जिवो बोली घोषणा कर दैछि 20 रु 24 पर्यंत आय जो रहिछि 25% टैक्स देवा को अर्थमंत्री घोषणा करिसेंती जहां निश्चित भाव में कहि परिबा ये आयकर दातांको पे एक खुशी खबर आनि लंबा समय धरि ये चर्चा होउथिला कि टिकस परिमाण रे बा स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती एवं तार प्रतिफलन आमे देखुचे आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सुभाकर पटनायक रहउचंती तांको ठारु आमे विस्तृत भाव में बुझिबा कि एहार आवश्यकता केते थिला बा स्लैब रे परिवर्तन करिबारो एहा द्वारा जो वर्ग उपकृत हेबे सेमानकर संख्या कोन होई पारे सेमाने किभली भाव में लाभवान हेबे एवं देशर अर्थव्यवस्था को एहा किभली बूस्ट करिवो सुभाकर विस्तृत भाव में बुझातु आवश्यकता एवं यार प्रभाव सब कौन पड़ो साधारण लोकों उपरे देशर अर्थव्यवस्था उपरे। हाँ बिगु एक्चुअली मध्यवित्त वर्ग बहुत दिन यहाँ दाबी करी आसुले जे टैक्स कर रिहाती दि जाऊ जोटा को मोदी सरकार मानी शुणी से हिसाब से वर्ष टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन आनी टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजिम ये मिलियो ओल्ड टैक्स रिजिम रे मिलियोनी तो जो माने नुआ टैक्स रिजिम को आपणेबे से माने ही कर रिहाती पाइबे एई अनुसार से मान को 12 लाख जाए टैक्स रिहाती मिलियो प्लस या सहित 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी यह अर्थ 12 लाख 75,000 आय पर्यंत सेमानकु कर देबाकू पड़िबो नाही याटू अधिक दर आय हेले सेमानकु कर देबाकू पड़िबो या सहित सरकार टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन करचंती जोटा कि 20 रु 30% टैक्स स्लैब रोटला ताकू भाग करी 20 रु 25 रु 30% टैक्स स्लैब ता तयारी करचंती गोटे नुआ टैक्स स्लैब करचंती या द्वारा मध्यवित्त श्रेणी रो मध्यवित्त आय वर्ग बहुत परिमाण रे लाभवान हेबे तांको हाथ रे अधिक संचय रहिबो से माने अधिक खर्च करि परिबे सुधाकर जेतोले प्रधानमंत्री गत काली मध्य कहिथिले मध्यवित्तक हाथ रे लक्ष्मी रुहंतु मध्यवित्त मानकर क्रय सामर्थ्य रहू अर्थात मध्यवित्तक ऊपर फोकस करा जाई पारे एवं गोटे ये बड़ खबर एवं खुशी खबर आमे बोली को बड़ गिफ्ट बोली कहै जिवो केथरा बजेट मिलिछि एवं जेतेबेले 12 लाख टंका पर्यंत आय थिले वार्षिक आमे कहि परिबा 80,000 टंका ठी बंचिलानी। हाँ निश्चय एक्चुअली या बहुत दिन है दाबी रही से मुद्रास्फीति इनफ्लेशन बढ़ी दर वृद्धि बढ़ मध्यवित्त पाखे संचय रोना हाथ में पैसा आसुना जहाँ दरमा मिलता सरी जाता से बर्तमान यही टैक्स स्लैब वृद्धि द्वारा से पाखे किसी संचय रही हाथ खोला कर खर्च करेंगे
निश्चित भाव में मध्यवित्त एक बड़ सरकार व्यय कही हम। ओके सुभाकर जमी आम देखुचे बर्तमान नुआ टैक्स रिजिम रे जे माने जाउचंती से माने 12 लाख पर्यंत रोजगार पर्यंत कोनोसी टिकस देबे नाही किंतु ता सहित पुराना टिकस व्यवस्था प्रचलन रहिबो किंतु एई पदक्षेप कुहा जाई पारे कि लोकन को गुटे प्रकार आकर्षित करिवो ए नुआ व्यवस्था रे बा नुआ टिकस प्रणाली रे टिकस पैठ करबा पई मोटामोटी भाव में कुहा जाई पारे कि लोके धीरे धीरे पुराना व्यवस्था को भूली जिवे एवं नुआ रे एटीसी बा अन्य से जे सबुर आवश्यकता थाए तार कोनोसी आवश्यकता रहिबोनी। हाँ निश्चित भाव सरकार चाहते जे समस्ते सरल टैक्स सरलीकरण हो एवं सरल अति सहज टैक्स दे पारंतु से न्यू टैक्स रिजिम व्यवस्था कराई एवं सरकार मध्य चाहते समस्ते ओल्ड टैक्स रिजिम छाड़ी नुआ टैक्स रिजिम नियंतु से केवल नुआ टैक्स रिजिम रे रियायती दिया पुराना टैक्स रिजिम रे कौनसी अधिक जहाँ पूर्व रही अधिक कौन रियायती दि जाऊना तो ये नुआ टैक्स रिजिम बल 12,75,000 टंका पर्यंत से कर देवा पड़ोनी कारण नुआ टैक्स रिजिम रे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी किंतु ता सत्वे जे पुराना व्यवस्था रे जीवा पई चाहूचंती पूर्व भली एटीसी हो बा शिक्षा लोन हो घर लोन हो ए सब रे ऊपर जो सब सुविधा पाउतिले बा छाड़ पाउतिले ता बलवत्तर रहिबो। हाँ जो माने ओल्ड टैक्स रिजिम रे सुविधा नबा चाहूचंती हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो एटीसी रे 1.5 लाख हो कि स्वास्थ्य बीमा ऊपर 50,000 पर्यंत हो कि घर भड़ा ऊपर नबा चाहूले रियायती नबा चाहते से ओल्ड टैक्स रिजिम थ्रू रे टैक्स फाइल करें तार सुविधा नहीं पारे। सरकार दुईटी एक व्यवस्था रखिंट ओल्ड टैक्स रिजिम एपर्यंत बंद कराई से बलवत्तर रही। सुभाकर बड़ कथा होची कि देश रे कर देबारे मध्यवित्तंकर गोटे बड़ योगदान रही एवं ये कहि परिबा सरकार जेतेबेले एबडी बड़ घोषणा करिसंती जहा द्वारा सेमानक भितर गोटे बड़ आश्वस्ति मिलिची काईकिना सरकार चाहिंचंती कि लोकंक हाथ रे टंका रहू फଳରେ सेमानकर गोटे क्रय सामर्थ्य मध्य रहिबो एवं जो कथा कुआ जाउतिला कि आयकर छाड़ सीमा 10 लाख टंका पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार देखिबा कि ता ठारो आहुरी खुशी बढ़ाई देइचंती तो ये आमा द्वारा भारतर अर्थनीति आहुरी सुदृढ़ हो बोली कुआ जाई परिबो कि। हाँ निश्चित भाव में या द्वारा अर्थनीति विशेष सुदृढ़ हम कारण लोकों पाखे जो अर्थ आसो से निश्चय भाव किसी नुआ जिनस किनिया चाहिए किसी अलग संचय करेंगे जो उभय माध्यम सरकार को परोक्ष व प्रत्यक्ष भाव में उपकृत हम और देशर विकास हम एन संदेह नहीं द्वारा बहुत अधिक संख्यक मध्यम वर्ग टैक्स फाइलिंग इच्छा प्रकाश कर आमे पूर्व व्यवस्था रे देखिथिले 15 लाख रु जो मानकर अधिक रोजगार थिला से मानक ऊपर 30% टिकस करा जाइथिला एवं से वर्गर लोके आमे देखुथिले अनेक समालोचना मध्य करुथिले तेनु से मानक पई मध्य आश्वस्ति कारण 24 लाख रु जदी अधिका रोजगार होची ताहले 30% टिकस दबा पई पड़िबो। हाँ 15 रु प्रथम 15 लाख ऊपर 30% थिला से स्लैब टाको भांगी देकरी 15 रु 20 लाख मध्य 20% 24 लाख पई 25% एवं 24 लाख अधिक आय उपर 30% सरकार करचंदी जहाँ एक निश्चित भाव अनेकों को खुशी करेबो कारण यह सेमानकर भी बहुत दाबी थिला जे एते कम आय ऊपर 30% कर देवा निश्चित भाव एक काटिकर थिला सेमानक पई ता सहित 25% गोटे नुआ स्लैब हैला। हाँ 20 रु 24 लाख नहीं कि गोटे नुआ स्लैब सरकार गठन करचंदी जोटे 25% कर देवा पड़िबो समान। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपन विस्तृत सूचना पाई एवं दर्शक बंधु बजेट क्यों सब बड़ दिग बजेट हेडलाइंस कौन आम क्रमान्वय आपको देखाई चेष्टा करुचु सरकार कौन सब बड़ पदक्षेप नहीं आम 10टी बड़ दिग बड़ पॉइंट को नहीं आपण सामने वर्तमान उपस्थापन करुचु। निश्चित भाव में 10टी पॉइंट बजेट 10 बड़ पॉइंट बजेट रे आयकर को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि ता सहित 12 लाख टंका पर्यंत आयकर सीमा छाड़ करा जायछि ता मासिक देखिबा कि 1 लाख आय ऊपर कोनोसी कर पड़िबोनी 12 रु 10 लाख हमें कहि परिबा बिभु 12 रु 16 लाख आय ऊपर मध्य कर पड़िबो 16 रु 20 लाख रोजगार ऊपर 20% कर देबा पई पड़िबो से भली 20 रु 24 लाख आय पई 25% टिकस ए होची नुआ स्लैब 24 लाख रोजगार ऊपर 30% टिकस
निश्चित भाव में तापर आयकर स्लाब रे ये बड़ परिवर्तन करा जायछि समस्त को नजर थिला सेपरि घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये होछि बजेट रे 10टी बड़ कथा आज संसद रे उपस्थापन होछि केंद्र बजेट 2025-26 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अष्टम थर पई संसद रे बजेट उपस्थापन करिसेंती तेबे बड़ कथा होछि बजेट रे इनकम टैक्स को नै बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री 12 लाख टंका पर्यंत टैक्स छाड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री कैपिटल गेन छड़ा अन्य आय 12 लाख टंका पर्यंत टिकस छाड़ नै घोषणा करिसेंती कैपिटल गेन थिले 8 रु 12 लाख पर्यंत आयकर 10% रहिबो सेहीपरि 12 रु 16 लाख पर्यंत आय पई 15% आपण टिकस देबे सेहीपरि 16 लाख रु 20 लाख पर्यंत आय पई 20% 20 रु 24 लाख पई आय पई 25% एवं 24 लाख रु अधिक आय पई टिकस 30% आपण देबा पड़िबो अनेपटे 12 लाख टंका पर्यंत आय थिले आपण भाबंतु वार्षिक आपनकु 80,000 टंका एठी बंचिजिबो सेहीपरि 18 लाख पर्यंत आय थिले आपनकु वार्षिक 70,000 टंका पर बंचिबो 25 लाख पर्यंत आपनकर जदी इनकम रहउची वर्ष को आपनकर 1.25 लाख अर्थात लक्षे 25,000 टंका आपनाटी सेव करि परिबे जहा द्वारा ये मध्यवित्तक पई मध्यवित्त वर्ग को खुश करबा पई बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री जहा द्वारा मध्यवित्तकर जीवन धारण आहुरी कहि परिबो सुदृढ़ हेबो बिल्कुल एवं मासकू जदि आपनकर रोजगार लक्षे टंका अछि ताहेले मध्ये चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण आपण सरकार को टिकस पैठ करू नाहंती एवं बजेट रे ए संक्रांतीय बड़ घोषणा करा जायछि वार्षिक जदि आपनकर रोजगार 12 लाख टंका ताहेले आपनकु कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही पूर्वरु कोन थिला पूर्वरु 7 लाख टंका पर्यंत आपनकु टिकस दबा पई पड़ु नथिला एहा बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन बाबद रे सरकार 75,000 टंकार रिबेट बा छाड़ देउथिले मोटामोटी भाव में 7 लाख 75,000 टंका पर्यंत जार रोजगार रही से कौनसी टिकस पैठ करू नथिले एवं अनुमान करा जाउथिला सरकार एथिरे वृद्धि करिवे किंतु आशा ठारू मध्ये अधिक वृद्धि करिसंती कहले भूल हेबो नाही कारण 12 लाख पर्यंत जदि जार वार्षिक रोजगार अछि ताठारू कौनसी टिकस नेबे नाही सरकार ए होची वर्तमान समयर बड़ खबर एहा बाद आयकर स्लाब रे मध्ये अनेक परिवर्तन करा जायछि कारण 24 लाख रु जार रोजगार जदि अधिक ताहेले से माने 30% टिकस देबे पूर्वरु जा 15 लाख रही तेणु ताकू नहीं मध्ये अनेक आलोचना हेउथिला एवं सरकार पूरा टिकस व्यवस्था रे केमिति जनसाधारण को सुहाइबो मध्यवित्त केमिति उपकृत होई पारिबे जो मानकर कम रोजगार रहउची से माने केमिति टिकस परिसर भुक्त न हेबे ता उपरे यथेष्ट गुरुत्व देइछंती से बली 12 रु 16 लाख आय उपरे 15% टिकस देबा पई पड़िबो अन्यपटे जदि 16 रु 20 लाख रोजगार रही ताहेले 20% 20 रु 24 लाख रोजगार पाई 25% एवं आपनकर रोजगार जदि 24 लाख रु अधिक रही ताहेले 30% रु अधिक टिकस देबा पई पड़िबो ए होची नुआ टिकस स्लाब जहां आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन समय घोषणा करिसंती एवं ये बजेट रे मध्यवित्तक पई ये गोटे खुश खबर हमें कहि परिबा मध्यवित्त को खुश करबा पई बड़ प्रयास हमें करा जायछि एवं बड़ आश्वस्ति आसी जायछि बोली कह जाय परिबो काहेकिना प्रधानमंत्री को कथारु जणा पडुतिला बजेट रे मध्यवित्तक पई किछि भलो रहिछि किंतु आशा ठारु अधिक देखिबा कि एथर अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसंती बजेट रो जो 10टी बड़ दिग जाहाकु हमें चर्चा करूछु प्रकृत रे 20 रु 24 लाख जाय आय पई 25% आपण आनिकी टिकस देबे सेही परि 24 लाख रोजगार ऊपर आपण 30% टैक्स देबे आयकर स्लाब रे बड़ परिवर्तन होईछि एवं समस्त अपेक्षा थिला एथर कोन प्रकृत रे परिवर्तन होई परे जा घोषणा करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये मध्यवित्त परिवार को बड़ आश्वस्ति आनुछि काहेकिना सरकार चाहिचंती लोकन को हाथ रे ठी टंका रहू फल रे सेमानकर जो क्रय करिवार सामर्थ्य बढ़िबो एवं कुआ जाउछि आयकर सीमा पूर्व कुआ गला कि 10 लाख पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार एठी 12 लाख पर्यंत पूरा देखिबा कि जेभली पदक्षेप नेइचंती कोनोसी इनकम टैक्स दबाकू पड़िबो नाही जो द्वारा कि मध्यवित्त श्रेणी लोके उपकृत हेबे एवं आम भारत अर्थनीति को आखि आगे रखी एभली गोटे बड़ पदक्षेप निया जायछि एवं ता सहित आपण देखंतु धनी गरीब मध्यवित्तक भीतर गोटे संतुलन आनिबा को सरकार एठी प्रयास करिसंती एवं विशेष करी मध्यवित्तक खुश करबा पई आयकर स्लाब रे एभली बड़ परिवर्तन आना जायछि लंबा समय धरी ए चर्चा हेउथिला कि